Good morning. I am Dr. Kakru, Director, Millennium India Education Foundation. So I welcome all the teachers who have joined with us for this workshop on life sciences. This is a series of the workshops that we have started on behalf of Department of Science and Technology, jointly with DIOS and BSA, Department of Education, Gautam Budh Nagar. It's a series of 3 workshops that initially we had an origami that was finished 2 days back, and it will be followed by another workshop, 3 days workshop from 7 to 9 on Vedic maths. So today, whosoever is with us, we have teachers from government schools as well as from the public schools. As far as Millennium India Education Foundation is concerned, our organization has been working since 2003 in Delhi on science popularization, revival of ancient art and culture, and zoonotic diseases. We have with us today Dr. Monica Cole, who is the Associate Professor Botany working with Hansraj College, Delhi. She will be taking the first class till 11:30 or so, and thereafter we will have another expert, Dr. Romila, who is also an Associate Professor Botany with Hansraj College. As we are expecting around 100 teachers, so I think we'll wait for 1 or 2 minutes. Till that time, I'll just show you some slides about our organization's work, and thereafter we'll straight away go for the workshop. Whosoever is not able to join us through the Zoom, this workshop is being also streamed live, and they can join us through that also. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आपको म्यूट पे रखिए प्लीज. ये हमारी संस्था के बारे में हम 2003 में रजिस्टर हुए हैं एज एन एनजीओ इन दिल्ली, और हमारा जो मिशन है दैट इज सिंपल, creating a platform for learners and making information accessible to all. So that it is out of that motto that we are today with us, with you people here. We work in Delhi, we work in for capacity building and skill development workshops. We have innovative delivery for knowledge sharing through various puppet shows, mobile planetariums, just to build the curiosity, scientific curiosity amongst the children. We conduct online, offline art shows, online workshops and exhibitions. And we have a special book for the children that is a content creation and publishing everything times. It's an e-book which is published from Canada, and it is globally distributed free, where children till 16 years of age can contribute about their whatever works or visions they have got. Science popularization is one of our key projects. So that's here we have been working with Ministry of Science and Technology, with Earth Sciences, Environment. So the basic objective is to develop scientific temper amongst the children. Zoonotic diseases, this is another area that we have been working with medical community in the country on sharing the scientific knowledge, research updates on the diseases that is coming from animals to human and vice versa. Like, for example, nowadays we are facing COVID. Similarly, there's a project that we have started, storytelling for the children. We collect different stories from around the globe, and through our everything times, we have a peer work story, but it is named as a peer work story, and it's on our Instagram handle. So you can watch it through our website also, www.mief
This is one of the very key projects, reviving Sharda script, the script which was developed around 3rd and 4th century AD for writing Sanskrit till Devanagari came into being. And this we are doing with around 8 universities in the country. And it's a capacity building program so that we can decipher the manuscripts which are written in this script regarding the knowledge, what is contained in that, because there are more than 10,000 manuscripts written in literature, science and technology and other subjects. So that is in nutshell, in summary, that we are doing. And we invite everyone who is interested in such works, they can connect with us, they can work with us. So this is a brief about our organization. It's a part of that, our mission that we are today with you. And now that we have more than 60 people here, so I will introduce Dr. Monica Cole, who is an expert on, she has worked a lot of, her works are on the biodiversity and biosphere, and she is a botanist by profession. So I will request her to kindly take the class forward. Dr. Monica, please. Thank you so much. Thank you, everyone. So I thank MIF for giving us this opportunity to interact with the teachers of the schools. It's very important for any college teacher to interact with the school teachers. So I'm grateful to MIF who are doing such important workshops for the school teachers, for the school students, even for the general public. Nowadays, everybody is talking about scientific social responsibility, and it is the responsibility of each and every one that we contribute to popularization of science. And also, science is taught in schools, but most often in the school, there is a problem in understanding some of the basic concepts. We teach science as any other subject, right? But science is not sociology. It is not, geography, or it is not, I may say, English or Hindi. We cannot teach science like we teach history. We cannot teach science like we teach the humanities subjects, or like we teach arts or languages. For science teaching, we need a certain set of skills. We also need to understand that science is everything which is happening around us. Anything which is happening around us is science. अब देखिए आपके आसपास अगर आप लैपटॉप पे इसको सुन रहे हैं तो वो साइंस है. How is it reaching you? How at different places in the country we are connecting to each other. How you teachers who are present in different parts of UP are on the same platform. So it is the science which brings us together. It is the science which connects us. So I gave you an example of this technology, that this platform, Zoom platform, is science. Can you give me any other examples? What is science around you? What is happening around you? Any scientific thing that is happening around you right now? Can you give me any examples? Ma'am, may I? Yes, please. Ma'am, the various food items that we eat, they have acids and bases in them. I mean, soap has base in it, and जो हम breathe कर रहे हैं, that is also science, right? Right. We are breathing in oxygen, we are releasing carbon dioxide into the environment. That is also science, right? There are so many things. Food is being, you must have had breakfast in the morning and that food is getting digested.
That is also science, right? So what I am trying to tell you is, आपने लाइट ऑन की सुबह नींद से उठ के, तो वो भी साइंस है. एक आप देखिए कि एक करंट जो वायर्स के थ्रू पास होती है वो इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट कर देती है. It's all because of the discoveries and inventions of science. The electric bulb is science because Edison worked so hard to get the best filament in the bulb, which can enlighten our. So what I'm trying to tell you is that science is everywhere. Science is in everything. So Dr. Kakru told us, me and Romila, that we should talk about the syllabus, which is there in class 6th, 7th, 8th, so that the teachers also can get more information, more knowledge on how to deal with these topics with the students. And our workshop is low cost, low cost and effective ways by which we can teach science. For this, I have chosen. Your voice is breaking. Unmute yourself. Monica, unmute yourself. Ma'am, you are not audible. Your voice is breaking. Unmute कीजिए अपने आप को. And I have Monica, you can't be heard. I have to deal with water. How many of you are teaching water? Can any of you tell me how do you teach water in the class? आपके एक टॉपिक है सिलेबस में वाटर, और फिर उसके बाद वाटर कंजर्वेशन है, वाटर पोल्यूशन है. तो जब आपको बच्चों को इंट्रोड्यूस करना होता है वाटर, हाउ डू यू teach this? How do you start talking about water in the class? Can anyone of you tell me? Anyone? Good morning. My name is Bhavna. Am I audible? Can I answer this question? Yeah, Yes, yeah, please. you can. Actually, Yeah, Mama, yeah. actually, first of all, my from class 1 to 3. So before then, I should know the properties. So that observation skills what they have. I think you can touch water and feel it, and then you can describe it. How you feeling it? Is it liquid or liquid? So it's a radar thing. What do you think? It's a bit sticky. It's sticking on your hands. Then it is colorless. So these are the property. First of all, let them know, and then you can explain the thing which is having all these properties. This is called to be a water. Hello. Connect. Yes. Give me. You cannot be heard. Monica, please अपने को unmute कीजिए. She is having some internet issues.
मैडम दोबारा से ज्वाइन करिए 10 लोग। अनम्यूट कर लीजिए मोनिका मैम अपने आप को। मोनिका अनम्यूट कर पाऊँ। Unmute yourself. I'm sorry, she is having some internet issues, so we will have to bear with her for 1 or 2 minutes. Hello, good morning, Kanpur sir. Hello, Kaku sir, good morning. What happened? आप लोग instead of Monica? No, sir. Sir, actually, I haven't received any link. So Monica ma'am shared her link with me. Okay. And I joined with that link. So probably it is showing Monica call. So can I get a link directly? Yes, I will send you. Yeah, thank you so much, sir. Where is she now? Because she has got some connectivity issues. Okay, I'll check with her, sir. Just check with her. Otherwise, you can exchange yourself. मैं Okay, भी sir. link भेज रहा हूँ क्योंकि till she Thanks. gets connectivity proper. Sure, sir. सेंड कर दिया मैंने लिंक मोनिका मैम को डायरेक्ट वाली।
We'll just exchange the speaker who was supposed to come at 11:30 because Monica is having some issues with her internet. So Dr. Romila, she was going to continue at 11:30. So I have asked us to start the lecture first, and then it will be followed by Dr. Romila, Monica Cole's lecture. So is Dr. Romila here? अभी नहीं है। उसका फोन नंबर है तेरे पास? वो भी आई थी ना मोनिका के इससे, लिंक भेज दो उस चीज। Okay. Has Romila been able to enter? No, Okay, I'll start then. I'm so sorry. Today this is for the first time it has happened. So I really apologize for all this. I have tried to take a hotspot from some of my students now. So I hope everything will be all right and we'll be able to do this further. So as I discussed, I'm going to discuss with you today about water, and we all teach water in our schools at various levels. Even in our drawings, when we start teaching at primary level, water becomes a very important element of drawings. Students love to draw rivers, students love to draw rain, students love to draw ponds, and they want to, draw beautiful
various components and what are so Your voice is breaking. let's understand water from scientific perspective. If I have to teach water to a class 6 student, I will start by asking him to collect water from various places in his school. He may collect water from the tap. He may have brought water from his house to the in his bottle for drinking. So how, and there must be certain plants grow. There would be a gardener who will be watering the plants. So the first thing I would have done as a teacher, I would have taken the student around and shown him how water is used for various purposes. His drinking water bottle tells him that water is used for drinking. When he sees a gardener watering the plant, it tells him that water is used for gardening. And also, then I bring him to the classroom and I tell him that if you look around you, if we look around our biosphere, if we look at the earth itself, 70% of it is water, 1/3 of the earth is water. So it is of important. We have 30% of the land and 70% is water. So this water constitutes the major part of the biosphere, the major part of the earth. And it is because of the water that the life is available on earth. If there was no water, there would have been no life on earth. That is why people are looking to at Mars. लोग Mars सोच रहे हैं कि Mars में life की traces देखें और वो वीनस में नहीं देख रहे और वो जुपिटर में नहीं देख रहे क्योंकि जहां उन्हें लगेगा कि वाटर था वहां प्रोबेबली लाइफ थी या लाइफ की एग्जिस्टेंस के चांसेस है. तो अगर मैं ये कहूं कि लाइफ इज वाटर, that would be more appropriate. You know, people can live without food for some days, but people cannot live without water. So it is one of the most important commodities. It is one of the most essential things which is required by living organisms on this earth. So now the thing is that we all know, all of us are teachers, all of us are teaching in various levels, and I'm sure each one of you understand the importance of water. I'm just reinforcing that water is scientifically as important as life, right? We teach students the difference between living things and non-living things. Similarly, we have to tell them water is an interface between the living and non-living, because water को अगर ऐसे देखा जाए तो वो non-living है, but life can only exist in water. Life evolved from water. जब हम पढ़ते हैं कि life कहाँ से शुरू हुई तो हम बोलते हैं कि there were jelly-like organisms which existed in water. They were small phytoplanktons, zooplanktons, and gradually life transformed, life changed. The evolution helped the organisms to move from water to land, and gradually those organisms which were found on the land got new organ systems. They adapted to the life in water, but evolution outside water. But the evolution of life has taken place inside water. So we have to understand the connectivity, because we are talking about life sciences discipline today.
So the connectivity between water and life is very important, and that is to be made understood to each and every student in the classroom. So the best thing what one can do is, if you have a microscope in your school, you can get a draw and if you observe the water drop from the tap, you can easily distinguish the nature of water. You will see in the water which is collected from the pond, there will be some organisms floating in it. So telling us that the river is a living system because it has water, life in it, and that life is sustained by water. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें वाटर की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. हमें फिजिको केमिकल नेचर, आप में से एक ने बताया था, हमें वाटर की प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी के पहले, क्योंकि क्यों वाटर इतना इम्पोर्टेंट है. वाटर इम्पोर्टेंट है क्योंकि 70% ऑफ द अर्थ surface is covered by water. Water is important because life evolved from water. But how, what makes water it so useful? What makes water so important? आप देखिए, water एक बहुत important solvent भी है. आप water में किसी भी substance को, जो polar substance हो, उसे dissolve कर सकते हैं. आप नमक डालिए, चीनी डालिए, कोई color डालिए, तो water में घुल जाता है. तो because water की solubility बहुत अच्छी है, ठीक है. So water is a liquid which is polar liquid. 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है. तो ये, और उनकी ओरिएंटेशन, उनकी बॉन्डिंग ऐसे है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है. इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यू कैन डिसॉल्व एनी आयनिक सब्सटेंस इन वाटर. So the next thing is that if water is important, if water is such an important entity, it can also be found in various forms. Water can exist as a liquid, pani jo hum dekhte hain. It can exist as a solid in the form of those glaciers, and water exists in ice sheets. Water is in the form of frost. That is the solid nature of water. And water can also exist as a gas, vapor form. So again, if you have to teach water to a class 6 or a 7 student, and you can also through water tell him what are the various states of matter: solid, liquid, gas, and all the states of matter, whether it is solid, whether it is liquid, or whether it is gas, all 3 states of matter can exist in water. And is also Your voice is again breaking, Monica.
Dr. Romila madam is here. Dr. Can you start from the Romila madam? Monica ma'am, you're not audible. Dr. Romila ma'am से start कराएं. बोलिए काकरू sir, as you say. I think Monica is still getting some issues, so she can continue later. Sorry, now Dr. Romila is with us, so we'll ask Monica to set her internet right, and then she can take it later. In the meantime, I invite Dr. Romila to kindly start her lecture. Yeah, good morning everyone. Good morning everyone present here. Good morning Kakru sir. So I would like to share. Just for your information, we have science teachers from government and public schools of Gautam Buddha Nagar who are teaching from 4th to 8th or 9th class. 4 to 8, 9. Okay, Yes. fine sir. Right sir. So I'll share my screen. Yes, please. इम्तियाज इनको ये करो. Yes, she is his. I hope it is visible, right? Yes, it has started. Okay, sir. हाँ जी आ रही है. You can start. Anji, so thank you so much, sir, for inviting me today on this platform, and I also thank all the organizers for organizing this workshop for the teachers. So this actually makes a connect between we and the teachers of the school, because हमको पता है कि sir, we have to be bilingual, right? Yes. Fine, sir. So जैसे कि हमको पता है कि हम स्कूल के बच्चे हैं जो हमारे पास कॉलेज में आते हैं, और हमें उतना काम नहीं करना पड़ता है बच्चों पे जितना आप लोग करके भेजते हैं स्कूल के टीचर्स. So I really appreciate all the teachers of school, and we are here to just tell us what else we can do while we are dealing with the students, because we can go further in it. So the topic that I have chosen from your life sciences is the word of living, right? So we know that we are going to talk about it. Monica ma'am will be talking about the abiotic factors, but I'm going to talk about the word of living. Okay, that means the biotic things we are going to talk about. So if I talk about the characteristics of living, हम सबको पता है कि हम क्या बोलते हैं कि हम living हैं. क्यों? क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं हमारे अंदर जो हम कर सकते हैं. सो ये जो लेडी आपको सामने दिख रही हैं, ये है मिसेस ग्रेन. ओके, एंड मिसेस ग्रेन के अंदर वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने चाहिए. तो जब हम बच्चों को, एक छोटे बच्चे को हम एक्साइट करने के लिए बोलते हैं कि व्हाई आर यू लिविंग, और ये टेबल क्यों लिविंग नहीं है, तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. तो हम एक एक्सरसाइज बच्चों को फटाफट से दे देते हैं कि आप बताइए कि क्यों जो आपके सामने बुक पड़ी है ये नॉन लिविंग है, तो क्या ये मूव करती है? नहीं करती. ठीक है, तो इस तरह से हम उनको जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो समझाते हैं. एंड ऑल ऑफ अस नो दैट द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बीइंग लिविंग आर मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन. तो अगर ये सारी चीजें किसी ऑर्गेनिज्म में है, कोई थिंग भी अगर ये सब परफॉर्म कर रही है, तो हम उसको लिविंग कहते हैं. अब यहाँ पर एक छोटे बच्चे के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या प्लांट मूव करते हैं? क्या सब कुछ रेस्पायर करता है? सब लोग सांस लेते हैं पर सबके पास नाक तो नहीं होती. सो मैं एक छोटे बच्चे के एंगल से, बिकॉज यू आर टीचिंग क्लास 4th ऑनवर्ड्स, सो मैं एक छोटे बच्चे के हिसाब से ये क्वेश्चंस उनके दिमाग में जरूर आएंगे. ठीक है, सेंसिटिविटी, मैं एक पेड़ को छूता हूं तो वो तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता, सो इज इट सेंसिटिव और नॉट? तो हमें
बच्चे को एक एक करके सारे कैरेक्टर्स धीरे धीरे सिखाने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से उसके अंदर एक कनेक्टिविटी बिल्ड होती है कि अगर मूवमेंट है तो जरूरी नहीं है कि इस मूवमेंट का नाम मतलब चलना है. It can be movement in any form. It can be folding of the leaves. It can be drooping down of the leaves. तो movement किसी तरह की भी हो सकती है, तो plants भी living है. So that is why the easiest way for students to remember is MRS, that is Mrs. Then growth, reproduction, excretion, nutrition, Mrs. Grin. तो एक इस तरह के से आप कुछ भी शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं जिससे एक बच्चे को याद हो जाए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. Okay, so Mrs. Gran is the most common one. Okay, so if now अगर कोई चीज living नहीं है तो can we call it a dead organism? Of course, but living things में what do you call clinical death? Clinical death क्या होती है? दो तरह की डेथ होती है, आपको पता है. एक बायोलॉजिकल डेथ होती है और एक क्लिनिकल डेथ होती है. ठीक है, क्लिनिकल डेथ को हम कहते हैं when there is no heartbeat, no breathing and no brain activity. तो वो बायोलॉजिकल डेथ नहीं होती है. अभी हो सकता है कुछ ऑर्गन्स में काम कर रहे हो, उसमें ऑक्सीजन होगी, कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्योंकि ब्रेन डेड हो रहा है तो धीरे धीरे वो एटीपी बनाना, बाकी काम करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, हार्ट बीट काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं ब्रेन को. तो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड. ठीक है, so then ultimately the biological death takes place, but this clinical death this can be reverted because we know that we have a mechanism that is called as CPR. और अगर किसी इंसान को कुछ टाइम के अंदर 10 मिनट के अंदर, not beyond that is the maximum time, 4 से 5 मिनट या maximum up to 8 minutes अगर उसको CPR मिल जाता है तो that person can be, the life can be revived in that person. तो मेरे हिसाब से सीपीआर, अगर आप देखो, सीपीआर में आपको हार्ट को पंप करना पड़ता है, सीपीआर में आपको रेस्पिरेशन, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना होता है. तो अगर बच्चों को अगर समझाना है तो सबसे आसान तरीका किसी भी ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, हम बता सकते हैं क्या वो रेस्पिरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है. So that is the first topic I have chosen that I'll be talking about, that is respiration. Okay? There are many practicals also जो आप लोगों को बच्चों को करवाने हैं for the respiration. तो respiration जब आप शुरू करो तो सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि respiration क्या है. हम हर बच्चे से पूछते हैं तो ज्यादातर बच्चे जवाब देंगे सांस लेना और सांस छोड़ना. ठीक है, ये एक्सरसाइज वो करके भी दिखा सकते हैं क्लास में बैठे बैठे. यू कैन टेल देम टू इनहेल एंड एक्सहेल. बट क्या रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना है? क्योंकि अगर हम ये कहेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, पूछेगा कि कैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पायर कर रहे हैं जो हमें विजिबल नहीं है, जो सांस ले रहे हैं सांस नहीं ले रहे. तो अगर हमें रेस्पिरेशन समझाना है तो रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड. जो हम खाना खा रहे हैं उस फूड का ब्रेकडाउन, उसको हम छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देते हैं. सो बेसिकली जो हम कह रहे हैं कि हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. So that is the process of breathing in and breathing out. Okay, but at the same time ये ऑक्सीजन कर क्या रहा है? ये ऑक्सीजन sugars को तोड़ रहा है, that is the breaking down of sugar and releasing energy. The same process can be defined as oxidation. जहाँ भी ऑक्सीजन यूज हो रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है, that process is called as oxidation. So energy is released. ऑक्सीडेशन किसी का भी हो सकता है, बर्निंग प्रोसेस को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. वहां पे एनर्जी जरूर निकलती है, बट वो चीज ऑर्गेनिज्म के जब अंदर हो रही है, दैट वी कॉल इट एज रेस्पिरेशन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच अ स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो yes, is it different from breathing? We can say that breathing is one of the process of the respiration जहां पे हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं. ठीक है, तो हम पता लगाते हैं कि
जो हम एयर अंदर ले रहे हैं, हमें पता है कि द air which we are taking it is a composition of multiple gases. It contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide and some other gases and even water vapor. So अगर हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो क्या हम वाकई ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं? Can somebody answer this? If we are inhaling oxygen, are we really inhaling only oxygen? No. No. Yes, अर्चना जी, आप मुझे बताएंगे कि हम क्या इनहेल कर रहे हैं फिर? अर्चना मैम? मैम may I? हाँ, श्योर कंचन मैम. हाँ जी मैम, actually as you said, breathing is a process of inhalation and exhalation only, and in respiration we can talk about the breaking down of the sugar and all. So whenever we are inhaling, as we all know that air is a mixture of gases, so inside the air there is a nitrogen as well, oxygen as well, and carbon dioxide as well. So we are inhaling it because there is no filters present on our nose ki wo filter ho sake. So whatever we are using inside the body, वो तो हम we are consuming it, but जो not required है वो we exhale whenever we are exhaling carbon dioxide. Okay, right, very right मैम. तो बेसिकली हमें बच्चों को बताना है कि हम जो कहते हैं कि सिर्फ हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, वो सही नहीं है. हम तो एयर इनहेल कर रहे हैं, पर एयर में जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 21% ऑफ ऑक्सीजन है. दैट मीन्स ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के मुकाबले काफी ज्यादा है. वेरी लो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, और ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है. फिर हम जो एक्सेल करते हैं उसके अंदर भी देयर आर all the gases present, but क्योंकि वो बॉडी के अंदर से होकर आ रही है, so कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है. तो अब हम the experiment which we have to show to students what this exhaled air contains, उसके अंदर होता क्या है. So one of the experiment, very common experiment, is that we can turn lime water milky in presence of carbon dioxide. तो जब लाइम वाटर लेते हैं, ये लाइम वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करते हैं तो एक केमिकल प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है. उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, उस वजह से जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होती है वो मिल्की दिखाई देंगे, वो टर्बिड दिखाई देंगे, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन गए तो वो टर्बिड हो गई. ठीक है, तो अब बच्चों को ये समझाना कि जो हम एयर ब्लो आउट कर रहे हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बताने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम लाइम वाटर लें, सिंपली उसमें ब्लो करें, फूंक मारें, और उससे वो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है. अब बच्चे के लिए तो ये बहुत आसान है, टीचर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज नंबर 1 दे हैव टू प्रिपेयर दिस लाइम वाटर हियर. ओके, so I am giving you here the composition of lime water कि आप कैसे बनाते हैं. Okay, so lime water को क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत आराम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाता है. इट इज अवेलेबल एज स्लेक्ड लाइम. तो आपने थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसको नॉर्मल डिस्टिल वाटर या पानी में मिला दिया. ठीक है, अब और उसको अच्छे से डिसॉल्व किया. डिसॉल्व करने के थोड़ी देर बाद आप उसको लेट इट सेटल, उसको रख दीजिए, सेटल हो जाएगा. तो ऊपर का जो पानी आपका बचेगा, ओके, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऊपर आपका सस्पेंड हो जाएगा और नीचे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा. तो जो ऊपर आपका बचा है दैट इज योर लाइम वाटर. तो ट्रांसपेरेंट आपको लेना है क्योंकि आपको बाद में दिखाना है कि ये व्हाइट सा हो जाएगा, ये मिल्की हो जाएगा. ठीक है, तो जस्ट टेक दैट सस्पेंडेड सॉल्यूशन व्हिच इज ट्रांसपेरेंट एंड दैट इज योर लाइम वाटर. योर लाइम वाटर इज रेडी. तो उसको आप एक बॉइलिंग ट्यूब में लीजिए, उसमें आपको फूंक मारना है. ठीक है, या स्टूडेंट से भी फूंक मरवा सकते हैं क्योंकि ये इतना कोई डेंजरस नहीं होता है. तो और अगर टू बी ऑन सेफर साइड आप एक सिंगल बोर्ड कॉर्क लीजिए जिसमें छेद होता है, उस कॉर्क के अंदर एक ग्लास ट्यूब डाल सकते हैं या स्ट्रॉ डाल सकते हैं, और यू जस्ट हैव टू ब्लो इनटू इट. सो देयर हैज टू बी कंटिन्यूअस ब्लोइंग फॉर दिस प्रोसेस एंड योर lime water will turn milky as you can see in the image here. Okay, the transparent solution in presence of carbon dioxide will turn milky. तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों टर्न होता है मिल्की, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म and this does not dissolve completely, it forms precipitate.
और इसलिए it becomes a suspended solid solution and it appears cloudy. Okay, so मैं क्योंकि अगर ये हमारा ऑफलाइन मीट होता तो मैं आपको ये करके दिखाती, but it is not possible from my home. So I have just taken this video from YouTube, and all of you can watch this video once. So they have explained the process completely, and you can see this video, and if there are any questions, you can ask me. Is it visible? Yes, ma'am. It will. Yes. मेरे को कुछ एप्लीकेशन थोड़ा सा बंद कर देती हूँ, वीडियो बंद कर देती हूँ अपना, तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। रोमिला मैडम, इसकी वॉइस नहीं आ रही है। सही है, दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है, लेकिन वॉइस नहीं है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। Include computer sound. Ma'am, please include computer sound. एक मिनट। मैम आप अपने से ब्रीफ कर दीजिए, वीडियो चलने दीजिए, ब्रीफ करिए। Okay, so I think that the video was visible to you. I think there was some echoing of the sound, and next time I'll mute myself when I'll play the video so that it is clearer. But this must be clear to you कि lime water solution कैसे बनना है और उसमें कैसे blow करना है, right? ये clear था सबको?
Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes. So this is the easiest of exercise that students can perform. So again, we can come to the same question. So what does this exhaled air contain? तो जैसे कि हमने inhaled air की बात करी कि वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आता है, it is a mixture of gases. The percentage of oxygen is very high there. Similarly, जब हम exhaled air की बात करते हैं, तो ये exhaled, this is a chart given here where you can see the percentage of oxygen is still higher as compared to carbon dioxide. लेकिन if you compare inhaled air with the exhaled air, the percentage is different. Okay, so ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो जाता है exhaled air में, और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप देखें बहुत ज्यादा बढ़ गया है. From 0.03 it has come to 4. नाइट्रोजन सेम रहता है. ठीक है, so this is the composition of gases in the exhaled air, and because of this increased concentration of carbon dioxide, we can say that कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाइम वाटर हैज टर्न्ड मिल्की. ठीक है, नाउ बच्चों के दिमाग में तो सवाल आएंगे ही, एंड इवन वी कैन आस्क, आई कैन आस्क यू कि अगर यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाइम वाटर मिल्की टर्न हुआ और इनहेल्ड एयर में नहीं हो सकता. तो इसके लिए एक हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं. So this experiment, you can say this is beyond your classroom, but you can still understand this, क्योंकि अगर आप चाहें तो ये परफॉर्म भी कर सकते हैं या प्रोजेक्ट की तरह बच्चों को दे सकते हैं कि they can perform in some extra classes. बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है. सेम अपरेटस आपको चाहिए. 2 बॉइलिंग ट्यूब लिया आपने एंड दोनों के अंदर आपने लाइम वाटर डाल दिया. ठीक है, उसमें आपने डबल बोर्ड कॉर्क लिया. आप डबल बोर्ड मतलब 2 छेद हैं कॉर्क में. एक में आपने बेंड स्ट्रॉ डाला या ग्लास ट्यूब, कुछ भी डाल सकते हैं. ग्लास ट्यूब थोड़ा सा हार्डी होता है तो आराम से मुड़ता वगैरह नहीं है. यू कैन इवन यूज अ थिक स्ट्रॉ. आजकल बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रॉ, मोटे स्ट्रॉ आ गए हैं विद बेंड ट्यूब आल्सो, दे आर अवेलेबल. सो टेक वन ऑफ द स्ट्रॉ. ये थोड़ा लंबा होना चाहिए, दैट इट शुड एंटर इनटू द लाइम वाटर. टेस्ट ट्यूब ए के अंदर लाइम वाटर के अंदर चला गया. द अदर स्ट्रॉ इन द टेस्ट ट्यूब ए should not touch the lime water. Okay, and you have to modify this glass tube with a stopper. ग्लास ट्यूब के ऊपर एक स्टॉपर लग सकता है, या फिर अगर आप स्ट्रॉ यूज कर रहे हो तो आपको एक क्लिप लगा लो, जैसे पेपर होल्डिंग क्लिप होते हैं, वो क्लिप आप इस पे लगा सकते हैं. तो दैट कैन ओपन और क्लोज द स्ट्रॉ. यही स्ट्रॉ दूसरी टेस्ट ट्यूब में कनेक्टेड है एंड इट इज एंटरिंग इनटू द लाइम वाटर. और ये दोनों स्ट्रॉ जो हैं, जो ट्यूब ए और बी से कनेक्टेड है, उसमें एक आपने एंट्री पॉइंट बनाना है. यू कैन यूज अ टेप और एक स्ट्रॉ उसमें एंटर करके टेप से उसको चिपका लीजिए, जहां से आप उसमें फूंक मार सके. यू हैव टू पुट एक्सेल्ड एयर इनटू इट. ओके, टेस्ट ट्यूब बी में आपने एयर को बाहर निकालने के लिए एक स्ट्रॉ और डाल देना, ताकि एक्सेस एयर जो बने वो बाहर निकल सके. ठीक है, वरना क्योंकि हमने पूरा कवर रखा है ऐसे, तो ये ठीक से होगा नहीं, उछाल मारेगा. क्योंकि आप एक्स्ट्रा कुछ पुट कर रहे हो तो प्रेशर बनेगा, वो कहाँ जाएगा. तो यू नीड टू रिलीज दैट प्रेशर. ठीक है, तो अब आप एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्लिप एक्स को ओपन करेंगे और क्लिप वाई को क्लोज करेंगे. ठीक है, जब आप क्लिप एक्स को ओपन करें और क्लिप वाई को क्लोज करें और फिर आप उसमें एयर एक्सेल करेंगे, आप उसमें फूंक मारेंगे. सो इट विल एंटर ओनली इनटू दिस लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रॉ. इट विल एंटर इनटू द बॉइलिंग ट्यूब. ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में अगर एयर जा रहा है, ये बाहरी थोड़ी है जो कह रही है. ओके, तो बॉइलिंग ट्यूब में अगर एयर जा सॉरी, यू हैव टू सक एयर. आपको एक्सेल नहीं करना है, आपको इनहेल करना है. यहाँ से आप हवा को बाहर निकालोगे. तो जब आप एयर इनहेल कर रहे हो तो एयर फ्रॉम दिस टेस्ट ट्यूब, द एम्प्टी रीजन विल इन. कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? या, थैंक यू. सो आप जब इसको इनहेल कर रहे हैं, यू सक एयर फ्रॉम द रबर ट्यूब विद योर एक्स ओपन एंड वाई क्लोज. तो यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब ए में जो एयर है वो बाहर निकल रही है. जब आप एयर को बाहर निकालेंगे, वहां पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा
तो जो आपका ब्लू वाला स्ट्रॉ है उससे एयर अंदर आएगी। तो जो एयर अंदर आ रही है वो नॉर्मल एयर है जो आप नॉर्मली इनहेल करते हो। तो दिस इज द इनहेल्ड एयर कमिंग इनसाइड इनटू दिस टेस्ट ट्यूब ए। ओके, सो this contain lime water, so you can check कि बाहर की एयर से क्या वो lime water is turning milky or not. Okay, in the second set of experiment आप क्लिप X को क्रॉस कर दो, बंद कर दो, और क्लिप Y को ओपन कर दो, then you blow in air. अब यहाँ से एयर अंदर डालनी है, तो it will enter into the right side of the pink straw. It will go into the lime water in the test tube B, and this lime water will turn milky. Okay, so test tube A will remain transparent, whereas test tube B will turn milky. So this proves that inhaled air में lime water milky turn नहीं हो रहा है, exhaled air में lime water milky turn हो रहा है. तो इसका मतलब the concentration of carbon dioxide in the exhaled air is higher than the concentration of carbon dioxide in the inhaled air. Okay, समझ आया experiment? Is it okay? Yes, ma'am. Fine. So this is how you design a different experiment for a student. तो इस तरह से आप डिजाइन करके उनको हर चीज, आपको साइंस है तो साइंस के साथ आपको एविडेंट प्रूफ भी देने होते हैं कि हाँ ये हो रहा है. तो अगर हम कह रहे हैं कि एक्सेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनहेल एयर की कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों नहीं है, कैसे प्रूफ करा कि नहीं है? वो हमने दिखाया कि इनहेल्ड एयर जब आ रही है तब लाइम वाटर मिल्की टर्न नहीं हो रहा है. राइट, so this is an experiment to show you. Other than this, there you can perform the same experiment using other chemicals also. Suppose आप lime water आपको नहीं मिल पा रहा है, but you have a chemistry lab in your school जहाँ पर आपको आराम से alkali मिल सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के टैबलेट्स मिल सकते हैं, और आपको एक इंडिकेटर होता है एल्कली का, फिनोप्थिलीन. तो कोई भी केमिस्ट्री लैब होगी उसके अंदर ये दो केमिकल्स तो इजीली अवेलेबल होंगे, क्योंकि वहां पे एसिड और बेस का काम हो रहा होता है. तो किसी भी बेस को चेक करने के लिए एक इंडिकेटर होता है विच इज कॉल्ड एज फिनोप्थिलीन. ठीक है, so these two chemicals are very easily available. फिनोप्थिलीन का क्या काम होता है? फिनोप्थिलीन is an indicator of alkali. That means it turns pink whenever it is added to alkaline solution or basic solution. Okay, so अगर वो pH high pH पे जाता है, pH 8 के करीब, the color of the solution will turn pink. Okay, so कोई भी alkali में अगर आप एक साबुन के घोल में फिनोप्थिलीन डालोगे, it will turn pink in color. So this is an indicator of alkaline solution. Okay, so आपने कोई एक alkaline solution लिया, KOH बना दिया, बहुत dilute बना दिया, और उसमें फिनोप्थिलीन की 2 ड्रॉप्स डाल दी. So that solution will turn pink and it looks like this. ठीक है, अब now again in the same solution you can blow in air. अब आप एक्सेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड is basically acidic in nature. In fact, when it mixes with water, it forms carbonic acid. Okay, so अगर किसी में ऑलरेडी कुछ एल्कली है और आप एक एसिड उसमें डाल रहे हो, तो इट विल बिकम न्यूट्रलाइज. वो एसिड एल्कली को न्यूट्रलाइज कर देगा. तो सॉल्यूशन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज, और जैसे ही पीएच डिक्रीज होगा, फिनोप्थिलीन व्हिच वाज एन इंडिकेटर ऑफ एल्कली, इट विल डीकलराइज, इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट. ओके, so again you can prove that in presence of carbon dioxide the alkali gets neutralized and the color, that is pink color, that disappears. तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है बच्चों को दिखाने के लिए. आपको सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा इसमें लाइम वाटर सस्पेंड करना, डिकेंट करना, उतना काम नहीं करना. आपने सिर्फ एक एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया, उसमें 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन का डाल दिया. ओके, बाकी आपने उसमें एयर ब्लो करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, इट विल न्यूट्रलाइज द एल्कली एंड इट विल, द पिंक कलर विल डिसअपीयर. और ये बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक तो पिंक कलर इतना सुंदर लग रहा है,
और फिर जब वो गायब होता दिखता है तो वो एक मैजिक की तरह लगता है। ओके, तो डिसअपियरेंस ऑफ कलर इज ऑलवेज वेरी फैसिनेटिंग। कहीं हम जादूगर के पास भी जाते हैं और फूलों का रंग बदल बदल के हमें दिखाता है तो आंखों को अच्छा लगता है, जो एकदम एविडेंट हो। ठीक है, तो इसलिए you can even try this experiment at your school, where you do not have to prepare the lime water solution, but simply you take a very dilute जितना देखो, जितना concentrated आप alkaline solution लोगे उतना ज्यादा आपको blow करना पड़ेगा। अब बच्चों को थकाना नहीं है हमने, तो बहुत ही dilute solution लेंगे और उसमें 1 ड्रॉप फिनोक्सिलिन का डाल दिया, it will turn pink। जितना लाइट पिंक होगा उतना जल्दी डिसअपियरेंस भी आपको दिखेगा। ठीक है, सो यू कैन इवन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट योर स्कूल लेवल। सो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हाउ व्हाट हैपेंस, होता क्या है कि हम बच्चों को समझा तो रहे हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पर ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग हियर? सो then you will have to explain the child the mechanism of breathing, अंदर जाके ऐसा क्या होता है। So I hope by the time you reach class 6th or 7th, you know the respiratory structures. You know there is a nose, larynx, trachea, bronchus, and bronchioles. Okay, so this is the structure, and these bronchioles are present in the lungs, which are the main organs for respiration. Okay, so again I will show you a video which will explain this process. Okay, so in this video it is very nicely explained. This video may not be for the students, बच्चों के लिए नहीं है ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेवल पे एक्सप्लेन कर रखा है, बट अगर, क्योंकि देखो टीचर्स का काम है, आपको भी पता है, आप लोग मुझसे अच्छे टीचर्स हो, कि हमको इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचानी है एक कंडेंस फॉर्म में। तो उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है, हमें ढूंढना पड़ता है कि क्या हम बेस्ट तरीके से बच्चों को दिखा सके वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने भी कोशिश किया, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और एक वीडियो जो मुझे सबसे अच्छा लगा, तो मेरे को लगा कि ये सब टीचर्स भी एक बार देखें तो वो अपने बच्चों को और अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अ वीडियो फॉर यू, very nicely explained. Okay. Ma'am, audio, there's no audio. ऑडियो नहीं आ रहा? It's very slow. सौरभ जी, आप मुझे बता सकते हैं ऑडियो कैसे आएगा इसका? लैपटॉप का जो मैडम, इसमें यूट्यूब का जो ऑडियो ऑप्शन है उसको फुल कर दीजिए।
यस, हाँ हाँ उसे फुल कर दीजिए। यस सही, यहाँ पे तो हाँ, यस यस full यस, दिखा रहा है म्यूटेड मुझे। है। यस, अभी आ रही है आवाज? No, नहीं अभी ma'am. नहीं। No, ma'am. Ma'am, is it possible for you to share the link in the chat box? I'll do that. Yes. I'm doing that. Okay. Yes, yes. Because this is a program that going on also live on YouTube. तो दो YouTube का साउंड एक साथ ये ओपन होने में दिक्कत हो रहा है। ओके ओके, दैट मे बी द रीजन। मैं इसका लिंक चैट बॉक्स में डाल देती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। ये बड़ा कैसे होगा स्क्रीन? मैंने लिंक इसका चैट बॉक्स में डाल दिया, आप लोग जरूर देखिएगा एक बार वीडियो। तो हमें भले ही बच्चे को ये सारा नहीं समझाना है, बट हमें, क्योंकि मुझे पता है हम सारे में से, मैं बॉटनी की टीचर हूँ, तो मुझे जोलॉजी में इतना अच्छा नहीं आता है क्योंकि विद टाइम हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो ऐसे ही स्कूल में भी हमको बच्चों को तो दोनों पढ़ाना होता है, बॉटनी और जोलॉजी, बट जो बॉटनी पढ़ के आया होगा उसको मतलब उसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसको कैसे समझाना है ये। सो आई होप सबको लिंक तो मिल ही गया है। को तब भी रन कीजिए कि उसमें वो इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है ना, तो पीपल कैन आल्सो सी। ओके सर। ओके, सो कमिंग बैक टू इट, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि हमने क्या देखना है उस वीडियो में, क्या पढ़ा है। इट इज जस्ट टेलिंग यू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दैट द एयर एंटर्स थ्रू द नोज, इट मूव्स थ्रू द ट्रैकिया, ओके, and trachea आगे जाके it is divided into two lungs. It enters into the lung, and when it enters into the lung, it is called as bronchi, okay, and bronchi are further branched into smaller branches which are called as bronchioles, and ultimately each bronchiole end up into an air filled sacs. बहुत सारे छोटे छोटे air filled sacs होते हैं which are called as alveoli. Now these alveoli ये इतना ज्यादा फैल जाते हैं, पूरे लंग ये फैले हुए होते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, सो दैट दे आर नाउ कनेक्टेड विद द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के साथ ये जुड़ जाते हैं, क्योंकि दैट मीन्स ब्लड कैपिलरीज उनके काफी पास आ जाते हैं। सो अब जब हम एयर ब्रीद इन कर रहे हैं विच कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो नाउ देयर इज अ रोल दैट ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, नाउ दोज कैन टेक अप द ऑक्सीजन। ये अब जो ये छांटने का काम था कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो काम यहाँ पर आकर हो रहा है, ओके। So now the RBCs take up the oxygen and take it to the other part of the body. In fact, it take it to the heart, और हार्ट फिर उसको पूरी बॉडी के अंदर पंप कर देता है। सिमिलरली कुछ कैपिलरीज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रही हैं वापस हार्ट से, वो एल्वियोलाई के अंदर वापस, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वहां से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वहां कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला जाता है। तो जब हम एक्सेल आउट कर रहे हैं तो अगेन जो एल्वियोलाई के अंदर जो एयर आई है कैपिलरीज से, वो बाहर निकल रही है, एंड दैट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि कैसे ब्रीदिंग हो रही है, एक सबसे आप लोग बच्चों को बोलिए कि कोई भी शीशा ले लीजिए सामने, ठीक है। दिस मैंने पहले नहीं बताया, एक शीशे के आगे जब भी हम एयर ब्लो आउट करते हैं, या आप चश्मे पे ही कर लीजिए अपने बच्चों के पास, अगर क्लास में शीशा नहीं होगा तो चश्मा ले सकते हैं अपना, उस चश्मे के ऊपर आपने एयर ब्लो आउट करी तो देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर वेपर्स ऑन दी लेंस, राइट। तो जब वाटर वेपर उस पे एक्यूमुलेट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एयर बाहर निकाली, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं टेस्ट कर रहे इससे, जो हमने एयर बाहर निकाली उसके अंदर वाटर वेपर्स भी हैं। तो जब हमने यहाँ पर बोला कि एयर कंटेन्स मल्टीपल
these gases majorly, तो जो बाकी का percentage बचा, that contains the other gases and the water vapor. So you can even see the water vapors here accumulated on the spectacles. Okay. Now जब बच्चा air in and air out कर रहा है, breathe in and breathe out कर रहा है, you can ask him to put his hand just below the chest. Okay, जहाँ पे ribs end हो रही हैं, उसके just वहां पर एकदम joint पे just put their hand on this and लंबी लंबी सांसें लें. Okay, so when they inhale and exhale, they can feel the change here. Something is going up and something is going down. That something is diaphragm. So diaphragm is one organ which is very important for the mechanism of respiration. That is very important for mechanism of inhalation and exhalation. So अब ये diaphragm कैसे काम करता है? That you can show by this simple experiment. Okay, so उसके लिए आपने एक bottle लेना है. Okay, simple. Let me show it in this video. Okay, before and you take a straw. In fact, आपने 2 straw लिए और दोनों का end एक common straw से जोड़ दिया. So every time you join 2 straws, you will be putting a tape around it ताकि वो हिले ना. जो 2 straws हैं उनके 2 end आपने balloon से बांध दिए. Okay, very simple. ये आपको दिख रहा है left side की figure में. बैलून से आपने इसको बांध दिया. ठीक है, उसके बाद आपने इस apparatus जो आपने बनाया इसको एक वाटर बॉटल के अंदर डाल दिया. पुरानी बॉटल, थम्स अप की कोई भी बॉटल, वो बॉटल को क्या करना है, आपने बीच में से काट देना है. Okay, you cut it from the center. Okay, so it is a half bottle actually, but it will have its lid region. तो lid region से straw निकल रहा होगा बाहर. But to make it airtight, okay, you put the cap back और cap में एक hole कर दिया. ठीक है, और इसको वापस लगा दिया. फिर इसको अच्छे से टेप से चिपका दिया. सिर्फ स्ट्रॉ का थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और इसको अच्छे से टेप से चिपका देंगे ताकि हवा कहीं और से ना जाए, सिर्फ स्ट्रॉ से अंदर जाए. ठीक है. The other end of the bottle, you can see the right hand image. Other end of the bottle, इसको भी एक बैलून से आपने कवर कर दिया है. एक बैलून में आपने गांठ लगाई. Okay, tie the balloon. Okay, so that you get a region to hold it. बस और कोई फंक्शन नहीं है, इसको पकड़ने में आसानी होती है. फिर बैलून को नीचे से काट दिया, उसका बेस चौड़ा हो गया, उसको आपने बॉटल की दूसरी साइड पे लगा दिया एंड कवर इट विद द टेप. मतलब उसको अच्छे से चिपका देना है ताकि एयर ना घुसे कहीं और से. ठीक है, so you make it an airtight chamber. Now what is the process of inhalation and exhalation here? Inhalation में आप खुद करके देखिए. अभी जब आप सांस लेते हैं, okay, तो बेसिकली दिस डायफ्राम, दिस जो हमने नीचे बैलून लगाया है, दैट विल रिप्रेजेंट द डायफ्राम. जो हमने डायफ्राम लिया, दैट विल मूव अप. सांस अंदर लेते हैं तो ऊपर को जाता है. ठीक है, और दिस इज द डिफ्लेटेड स्टेज. अभी इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि एयर जो है अब ये ऊपर जा रहा है. तो इस बॉटल के अंदर एयर जो है, दिस वाज बी मेड एट एन एयर टाइट चैम्बर. इस बॉटल के अंदर जो एयर है वो इस स्ट्रॉ से बाहर निकल रहा है. राइट, क्योंकि अगर निकलना चाहे तो, वरना वो अंदर ही है. अभी ये दिस इज कॉल्ड अ डिफ्लेटेड स्टेज. जो ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं कि पिचक जाएगी लंग्स बुरी तरह से, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है. इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले सांस अंदर लेंगे और फिर छोड़ देंगे. तो अंदर लेने से क्या होता है, दिस विल रिप्रेजेंट योर नोज रीजन. ठीक है, और यहाँ से व्हेन यू इनहेल एयर, this air will enter into the balloon and balloon will swell. पर ये कैसे हो रहा है, ये आप यहाँ से तो आप इनहेल नहीं कर सकते, तो आप इसे कैसे दिखाएंगे. The moment you pull your diaphragm, जो नीचे बैलून है, आप उसको नीचे को खींचते हैं, तो this is an airtight chamber. तो यहाँ पे suction generate होता है. That results in inhalation of air from the straws. Straws में जैसी air भरती है, the balloons will swell. So basically, this rubber sheet below, this represent the diaphragm, balloons represent the lungs, and this represents your trachea and the nose. ठीक है, तो जब आप इसको नीचे को खींच रहे हैं, ये बैलून स्वेल हो जाएंगे. That means जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, तो डायफ्राम नीचे को जा रहा है, लंग्स फूल रहे हैं,
and even your chest become broader. ठीक है, छाती फूल जाती है तब. So that is the process that takes place during this mechanism of breathing. So you can explain it. और जब आप इसको वापस छोड़ेंगे, नीचे वाली शीट को छोड़ देंगे, ये वापस deflate हो जाएंगे. So lungs get deflated. So during inhalation, lungs get inflated, and during exhalation, lungs get deflated. Okay, so that is how you make the students understand the mechanism of breathing. So this is the most simplest of not most simplest of experiment, but they have to design this apparatus, they have to design this model of lungs. Okay, और जो बच्चों को बनाने में मजा भी आएगा, and they can easily understand the process of breathing कि what is actually happening with our lungs. So diaphragm का बहुत important role है. Diaphragm क्यों ऊपर नीचे जा सकता है? Anyone from you can tell me कि diaphragm में ऐसा क्या है कि वो it can move up and down? Ma'am, it's a muscular structure actually. Maybe that is the reason. Yes, ma'am. Thank you so much. बिल्कुल सही, क्योंकि muscles है तो muscles can contract and expand. Okay, तो इसलिए ये ऊपर नीचे आराम से जा सकता है. साथ ही जो हमारा rib cage है, rib cage is also connected with cartilage and muscles. So वो भी help करती है कि हम जो कहते हैं कि छाती फूल रही है, कम हो रही है during exhalation and inhalation, so that is also because of the muscles. So muscles को भी आप यहाँ पे introduce कर सकते हो बच्चों को कि there is a this tissue is very important. Wherever there is contraction, expansion या movement जहाँ पे भी आ रहा है, muscles are important there, right? So I had another video here, but video ठीक से चल नहीं रही है, तो I can skip this part here. But I hope this model is clear to you, or I can even share this link with you if you want. I hope it is clear, so I'll move forward. Now, अब अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी कि बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि हमने अभी तक जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात किया है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, and we require a nose for it. So how do animals that do not have nose breathe in? This can be a very interesting questions for student, and you can give this question to them as project. कि you know that आजकल बच्चों के पास सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, तो they can make an assignment on it. Okay, thinking beyond the classroom कि जो animals, different animals कैसे breathe करते हैं, पानी के अंदर animals कैसे breathe करते हैं, fish कैसे breathe कर रही है. So उनको इससे एक आइडिया होगा कि सब organisms के पास, सारे living organisms के साथ पास lung नहीं होता है. Okay, तो जिनके पास लंग्स नहीं होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है. एंड अल्टीमेटली जब ये सारे एनिमल्स का धीरे धीरे दे कैन गिव अ प्रेजेंटेशन इन द क्लास, शो एंड टेल कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ कर रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे प्लांट्स का मैकेनिज्म भी बहुत क्लियरली समझ आएगा कि प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं. ओके, सो आई हैव टेकन फ्यू एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल अर्थवर्म. ओके, तो अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है? अर्थवर्म स्किन से ब्रीथ करता है, इसमें कोई लंग्स नहीं है. ओके, सो इट कैन ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन. ओके, एंड द स्किन डायरेक्टली फंक्शंस व्हाट एल्वुलाई डज इन द लंग्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि स्किन के जस्ट पास, दिस इज द, आप नीचे इंसेट में देखिए आउटर मोस्ट लेयर, द येलो वन, इट इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द ब्लड कैपिलरीज. ओके, आर्टरीज और वेन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है. तो स्किन से ही जब वो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहा है, तो वहीं पर डीऑक्सीजनेशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इज टेकिंग प्लेस. ओके, सो दैट इज हाउ अर्थवर्म कैन ब्रीथ विदाउट लंग्स. वेरी सिंपल बॉडी, छोटा सा एनिमल है, तो वो स्किन के हेल्प से ब्रीथ कर पा रहा है. फिश, अगेन स्टूडेंट्स विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, they have these special structures called gills. Okay, और हर मछली में आप जब भी आप बच्चों को शुरू करिए कि आप एक मछली बना के दिखाइए, जब भी वो ड्रॉ करेगा मछली के गर्दन के पास वो एक से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. What is the structure? That is the gill cleft. Okay, उस gill cleft को जब हम उठाते हैं
तो उसके अंदर आपको रेड कलर के गिल्स दिखते हैं। ठीक है, अब ये रेड क्यों दिखते हैं? आप में से जितने लोग मछली खाते होंगे, अगर आपको आइडिया होगा कि अगर आप मार्केट में मछली खरीदने जाएं तो हम मछली भी ऐसे ही चूज करते हैं, राइट? हम गिल क्लेफ्ट को उठा के देखते हैं, अगर वो अच्छा खासा रेड है तो दैट मीन्स इट इज अ फ्रेश फिश। अगर वो काला सा पड़ रहा है तो ये स्टेल फिश है। क्यों? क्योंकि इन गिल्स के अंदर होती हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो वही जैसे अर्थवर्म में, एल्व्यूलाई में, जहां भी एक्सचेंज ऑफ एयर होगा वहां पे कैपिलरीज कनेक्टेड होंगी। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, इसलिए डीप रेड कलर के दिखते हैं। और जब ये फिश मुंह से पानी लेती है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर, सो एंड वाटर कम्स आउट फ्रॉम द गिल्स। ओके, इट कम्स आउट फ्रॉम द गिल क्लेफ्ट, तो ये गिल्स के थ्रू होते जाता है। तो जब वाटर गिल्स के थ्रू होके जाता है तब वो ऑक्सीजन कैपिलरीज ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती हैं। तो दैट इज हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन फिश। ओके, इसी तरह से हम एज आई सेड दैट कितने भी ऑर्गेनिजम्स का आप बच्चों को एक एक ऑर्गेनिज्म बांट दो, छोटा बहुत कॉम्प्लेक्स जिसमें हो वो देने की जरूरत नहीं है, बट एक ब्रीफ आइडिया के लिए कि बच्चों को पता चले कि सारे ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं। ब्रीदिंग का तरीका डिफरेंट हो सकता है, ऑक्सीजन लेने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो आप कॉकरोच का पूछ सकते हो, फ्रॉग्स का, स्नेक्स का, बर्ड्स का, किसी का भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो जस्ट a brief interesting features of some of the organisms. कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे जो बॉडी है उसके अंदर पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, कॉकरोच की भी नाक नहीं होती है, तो वो ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। so it breathe from this spiracles. Frog is again very interesting, but it is a complex structure. Even turtle की respiration भी बहुत complex है बच्चों को समझने के लिए. But you can say that frog बहुत interesting इसलिए क्योंकि उसमें 3 तरह की respiration हो रही है. It has nostrils present. यहाँ पे इसके nostrils होते हैं, so it can respire from its nose. It has lungs present in the body, and ये मुंह से भी सांस ले सकता है. यहाँ पे आपने देखा होगा फ्रॉग कई बार बोलता है तो गला फूलता है, दैट इज बकोफेरेंजियल. सॉरी, हाँ, at that time it can take more oxygen and it can accumulate air there, and even it can respire from the skin, right? So frog amphibians होते हैं, तो amphibians में खास तरह की respiration होगी. सिमिलरली टर्टल्स, ये भी लैंड में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, तो टर्टल्स में भी बहुत डिफरेंट तरह की रेस्पिरेशंस होती हैं. क्लोकल रेस्पिरेशन भी होती है, मतलब वो इट टेक्स एयर फ्रॉम माउथ एंड इट कैन रिलीज इट फ्रॉम द बट. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्टल. और टर्टल में खास बात क्या है कि इसका भी ये जो बाहर शेल है ये इसकी रिब्स की तरह काम करता है. ठीक है, लेकिन ये इतना हार्ड होता है कि ये मूव नहीं कर सकता, सिर्फ अंदर की जो मसल्स होती है वो मूव करती हैं. स्नेक कैसे ब्रीथ करता होगा? क्या स्नेक स्किन से ब्रीथ कर सकता है? अर्थवर्म हम कह रहे हैं स्किन से ब्रीथ कर सकता है, क्या स्नेक भी स्किन से ब्रीथ कर सकता है? यस मैम. ओके, बट जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है स्नेक्स के ऊपर स्केल्स होते हैं, राइट? ये सारे रेप्टाइल्स जितने भी उनके ऊपर मोटे मोटे स्केल्स होते हैं, राइट? और वो स्केल्स इतने हार्ड होते हैं कि वो एयर को अंदर पास नहीं होने देते. तो स्नेक तो बहुत सिंपल उसका मैकेनिज्म है, ये उसका नॉस्ट्रिल है एंड इट ब्रीथ्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स ओनली. उनके पास गिल्स भी नहीं होते हैं. ठीक है, वो तो पानी के अंदर बहुत टाइम तक वो बिना सांस लिए भी रह सकते हैं. Okay, but they take air from their nostrils, not from their skin. So these are different mechanism. हमें देख के कुछ और लगता है, होता कुछ और है एक्चुअली में. तो you can give this as project. छुट्टियों में आप दे दो बच्चों को, बच्चे एंजॉय करेंगे इनके बारे में पढ़ना, डिस्कवरी देखेंगे इस बहाने से. तो कुछ तो अच्छा, गेम छोड़ के कुछ अच्छा करेंगे कंप्यूटर पे. Okay, so now after talking about so many animals, I'll come to my
favorite part, that is plants. How do plants breathe? Okay, अब plants में क्या है, ना तो उनकी nostril है, वो कैसे breathe करते हैं? Okay, so plants too have special mechanism, but how do you show that कि plants also respire? Plants भी respire करते हैं, वो कैसे show करेंगे? So very simple experiment here again. आपके पास you can take the same solution, alkaline solution with few drops of phenolphthalein. It will turn pink. Now कोई भी plant लिया आपने, any wild plant or small herbaceous plant with good amount of roots in it, तो उसकी सिर्फ आपने roots ले ली, roots धो दी अच्छे से, तो ताकि कोई मिट्टी से पानी गंदा ना हो, बस इसलिए, ठीक है, आपने ये roots धो दी and put the roots of the plant in water. सिर्फ roots डाल दी इसके अंदर. Alkaline water जो pink color का था, after some time it will become colorless. So again this shows that roots produce carbon dioxide. और वो carbon dioxide कब produce कर रही हैं? They are producing carbon dioxide during the process of respiration. Okay, they are taking in oxygen and they are giving out carbon dioxide. Right? तो बहुत अच्छा सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि सिर्फ एनिमल्स नहीं, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं. ओके, सो हाउ डू प्लांट्स रिस्पायर नाउ? सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम रूट्स की बात कर रहे हैं, रूट्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल. सो वी नो दैट. आप बता सकते हो कि आप 2 पॉट्स लो, और दैट विल बी अ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट. उसमें आप एक पॉट में तो मिट्टी को पूरा अच्छे से दबा दो, पानी डालो, खूब सारा पानी डालो और मिट्टी को पूरा दबा दो ताकि उसके अंदर कोई ऑक्सीजन या एयर नहीं बचे. और दूसरे पॉट में आप मिट्टी में गुड़ाई करो ताकि उस पोरस मिट्टी हो. ठीक है. सो द प्लांट विच इज ग्रोइंग इन दिस पोरस सॉइल विल फ्लरिश वेल एज कंपेयर टू द प्लांट विच इज आइदर इन अ वाटर लॉक्ड सॉइल और अ कंपैक्ट सॉइल, क्योंकि उसमें एयर नहीं है. तो जहां पर एयर नहीं होगा वहां ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो रूट्स रिस्पायर नहीं कर पाएंगी, और उस वजह से प्लांट का डेथ हो जाएगा या वो ग्रो नहीं कर पाए. ठीक है. सो दिस कैन बी एक्सप्लेन टू देम. अदर देन रूट्स, क्या प्लांट के बाकी पार्ट भी रिस्पायर करते हैं? हाँ, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन रिस्पायर. जहां जहां पे एनर्जी की जरूरत है वहां पे रेस्पिरेशन भी ज्यादा होगा, जहां पे एनर्जी की जरूरत कम है वहां पे रेस्पिरेशन भी कम होगा. ओके, सो दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट टू शो दैट plants respire, and this time हम roots की जगह we can take the seeds. We will take the material which is easily available. So you can take seeds. So you can take germinating seeds and the dry seeds. ठीक है, आपने चना ले लिया, उसको थोड़े टाइम पानी में भिगा के रखा, let it sprout. तो जो अंकुरित चना है that is your germinating seeds. और जो आपने stored लिया है, dry लिया है, वो आपका dead seed हो गया. ठीक है. तो अब आपने क्या किया, आपने कॉटन लिया, वेट कॉटन, उसके ऊपर एक में आपने जर्मिनेटिंग सीड्स रख दिए, एक में आपने रख दिया डेड सीड्स, नॉट डेड बट यू कैन से डॉर्मेंट, विच आर नॉट ग्रोइंग, डॉर्मेंट रख दिया. ठीक है, जो आपके ड्राइड स्टोर्ड सीड्स हैं वो रख दिए. उसके बाद आपने लिया एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाल दिया, कोई भी आप एल्कली डाल दो, सोडा लाइम डाल दो, KOH की टैबलेट्स डाल दो. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सोडा लाइम और KOH इज दैट इट कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. The other end of the conical flask is connected to a beaker containing water using a glass tube. तो एक इसमें ग्लास ट्यूब गया और वो it is connected to a beaker containing water. Okay. Now, what is the role of this soda lime? The role of soda lime is that it will absorb carbon dioxide. So, if these seeds are respiring, let me take example of germinating seeds. If they, because they are respiring, there is oxygen present in the conical flask. They will take in oxygen and give out carbon dioxide. Okay. When they produce carbon dioxide, this carbon dioxide is taken up by the KOH और सोडा लाइम, उसने एब्जॉर्ब कर लिया. तो अब क्या हुआ, जो इसके अंदर एयर थी,
एयर में से ऑक्सीजन तो आपके प्लांट्स ने ले ली, तो देयर विल बी जनरेशन ऑफ पार्शियल वैक्यूम, सक्शन प्रेशर जनरेट होगा, राइट। एयर थी, एयर हमने ले ली, तो और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली, जो एयर की जगह आनी थी, जो बची हुई एयर आनी थी, वो तो सोडा लाइम ने ले लिया, तो वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, ओके। बिकॉज ऑफ दैट वैक्यूम द वाटर इन द बीकर राइजेस अप, ठीक है। तो दिस राइज इन वाटर कैन टेल यू कितना वाटर राइज हुआ है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर टेकन अप बाय द प्लांट्स, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन अप बाय द प्लांट्स, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन अप बाय द जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है। और दूसरे सेटअप में वहां पे भी आपने सब कुछ सेम लिया, पर आपने वहां पे स्टोर्ड सीड्स लिए, ड्राई सीड्स लिए। तो ड्राई सीड्स में वी नो दैट रेस्पिरेशन नहीं हो रही है, रेस्पिरेशन तभी होती है जब ग्रोथ होता है प्लांट का। तो जिसमें रेस्पिरेशन नहीं हो रही है, जो डॉर्मेंट स्टेज पे है, which are considered dead, which are actually dried, then कोई रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, तो एयर ना तो कोई लेगा ना कुछ छोड़ेगा, so there will be no rise in the liquid, okay. So this kind of experiment you can perform to show in the class. From this apparatus it seems that this is bit tedious, थोड़ा देखने में लग रहा है कि आपको ये सब अरेंज करना पड़ेगा। तो इसका अल्टरनेटिव है ये एक सिंपल apparatus, देखिए ये बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं चाहिए, एक बॉइलिंग ट्यूब चाहिए, एक सिंगल बोर्ड कॉर्क चाहिए, एक ग्लास ट्यूब चाहिए और एक बीकर कंटेनिंग वाटर चाहिए, बस, ठीक है। ग्लास ट्यूब के अंदर आपने प्लांट मटेरियल डाला, अब आप इसमें कुछ भी प्लांट मटेरियल डाल सकते हैं, आप सीड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स डाल सकते हैं, फ्लावर्स डाल सकते हैं, लीव्स डाल सकते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट जो रेस्पायर करता है, यू कैन पुट दैट पार्ट इनटू दिस प्लांट। आपको पूरे प्लांट की जरूरत नहीं है, you can even take a small portion of the plant and put it in the tube. Then you will have to insert soda lime or KOH. तो एक blotting paper लिया, उसको alkaline solution में dip किया, उसको KOH में dip करा और इसके अंदर introduce कर दिया। Rest of the apparatus is airtight. So whatever air is present inside this boiling tube will be taken up by the respiring plant material, ठीक है। प्लांट मटेरियल जब रेस्पायर कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है वो KOH अब्सॉर्ब कर रहा है, द ब्लॉटिंग पेपर इज एब्सॉर्बिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इन रिटर्न देयर विल बी जनरेशन ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की वजह से देयर विल बी राइज इन द वाटर लेवल, ओके। सो दैट्स व्हाट प्रूव्स दैट प्लांट्स आर रेस्पायरिंग. Any part of the plant can respire. You can change the plant material, any part of the plant will respire. When it will respire, it will take in oxygen, give out carbon dioxide, and because we are absorbing this carbon dioxide, there will be creation of vacuum and there will be rise in the water. I hope this experiment is clear. Yes, ma'am. है ना, और सिंपल भी है, बहुत मुश्किल नहीं है कुछ। Yes. आपको कोई ट्यूब नहीं लटकानी, बहुत सारे स्टैंड अलग अलग तरह के नहीं चाहिए, एक सिंपल स्टैंड चाहिए और ये सब अवेलेबल होगा आपकी लैब्स में, ठीक है। और इसमें एक खास बात क्या है कि आप बच्चों को दिखा सकते हो कि लीव्स भी रिस्पायर कर रही है, स्टेम भी रिस्पायर कर रहा है, फ्लावर्स भी रिस्पायर कर रहे हैं, तो आप सब प्लांट मटेरियल इसमें दिखा सकते हैं। So how much time do I have? Kakru sir, do I need to continue till 1 or Monica ma'am will rejoin? Saurabh, are you there? हेलो, वो हाँ जी, मोनिका sir. इज कमिंग एट 12 o'clock, उसका Okay, फोन sir. आया था Right sir, तो I'll continue. ना, then. तब तक यू कैन कंटिन्यू और यू कैन इंटरेक्ट, किसी के कोई क्वेरीज हो तो यू कैन। हाँ, श्योर। तो अभी तक जितना हमने बात करी है, कोई किसी का कुछ क्वेरी है तो यू कैन प्लीज आस्क मी। Excuse me, ma'am. हाँ जी, प्लीज।
how much time this last experiment will take? The previous one, which I showed you, this takes only 5 to 10 minutes. Immediately, जैसे आप इसको dip करते हैं इसके अंदर, the plants are in the respiring mode. वो oxygen तो ले ही रहे हैं. Immediately there will be generation of vacuum और ये rise ऊपर होता रहता है. Thank you, ma'am. ठीक Thank है, you, ma'am. इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता सकती हूँ कि जैसे मैं कह रही हूँ कि आप कोई भी प्लांट मटेरियल ले लो, ठीक है, आपने लीफ ले लिया, तो क्या लीव्स में राइज होगा? डू यू थिंक कि लीफ में रेस्पिरेशन होता है, राइज होगा? हमारे पास एचडीएफसी भी है ना शायद, तो एचडीएफसी में डाल दो कल. कोई बताएगा मुझे? Yes, it will be there. There will be there, but अगर मैं बोलूं कि लीव्स, अगर मैं बात कर रही हूँ, लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, मैं दिन के टाइम ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. लीव्स में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन जनरेट हो रही है. तो एक तरफ तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रही है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, तो क्या वैक्यूम क्रिएट होगा तब भी? No, ma'am. नहीं होना चाहिए, तो फिर राइज भी नहीं होना चाहिए. अगर वैक्यूम नहीं क्रिएट हो रहा तो राइज नहीं होगा, है ना. तो अब ये प्रॉब्लम है ना, फिर बच्चों को कैसे दिखाएंगे कि प्लांट रेस्पायर कर रहे हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने बॉइलिंग ट्यूब को एक ब्लैक चार्ट पेपर से कवर कर देते हैं. अगर हमने अंदर लीव्स लिया या कोई भी ग्रीन प्लांट मटेरियल लिया, तो वी विल कवर दिस apparatus, दिस बॉइलिंग ट्यूब with a black chart paper. Now the role of this black chart paper is that it will cut off light. और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, है ना. तो अगर मैं इसको ब्लैक चार्ट पेपर से कवर कर रही हूँ तो मैं फोटोसिंथेसिस को नेग्लिजिबल कर रही हूँ. तो इसके अंदर अब जो प्रोसेस हो रहा है, दैट विल बी ओनली रेस्पिरेशन. और सिर्फ अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो वैक्यूम क्रिएट होगा और राइज होगा. ठीक है, आसान है ये भी. फोटोसिंथेसिस को कैसे रोका जाए? कहीं भी फोटोसिंथेसिस रोकनी हो, यू प्रोवाइड डार्क कंडीशन टू इट फॉर सम टाइम. जितनी देर तक डार्क में रहेगा, फोटोसिंथेसिस का नाम ही फोटोसिंथेसिस है, लाइट की प्रेजेंस में होगा. ऑक्सीजन जनरेट लाइट की प्रेजेंस में होगा, फूड जनरेट लाइट की प्रेजेंस में होगा. तो अगर मैं लाइट बंद कर रही हूँ, लाइट की सप्लाई, तो फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली नहीं होगा उसमें. तो जो मेरा एक हिंड्रेंस था कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी, आई एम रिमूविंग दैट. ठीक है, तो इफ यू आर प्लानिंग टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, मेक श्योर whenever you are taking the green plant part, cover your boiling tube with a black chart paper. Okay, then you can study respiration in any plant part. Thank you, ma'am. और एक और चीज है, जैसे आपने बोला कि कितनी देर तक हम ये राइज होगा, मैंने बोला कि 5 या 10 मिनट में हो जाएगा. अगर मैं इसको चलने दूं एक्सपेरिमेंट को, कि पड़ा है रेस्पायर तो करता रहेगा, कुछ टाइम के बाद रेट ऑफ रेस्पिरेशन फिर कम होने लग जाएगा, क्योंकि ये प्लांट मटेरियल तो मैं प्लांट से तोड़ चुकी हूँ. एग्जैक्टली, इट विल स्टार्ट टू डाई एंड डीके. ठीक है, तो धीरे धीरे जब प्लांट पुराना होता जाएगा, रेस्पिरेशन का रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होता जाएगा. तो आपको 15-20 मिनट से ज्यादा ये एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपका कम हो जाएगा, राइज नहीं होगा. फिर राइज शुरू के ही कुछ टाइम में होगा, शुरू के 5-10 मिनट में अच्छा बढ़िया राइज होगा, उसके बाद नहीं होगा. ठीक है, तो बहुत छोटा सा, बहुत जल्दी हो जाता है ये एक्सपेरिमेंट, ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, हो भी जल्दी जाता है. एक प्रिकॉशन जो आपको ध्यान रखना है वो है, apparatus शुड बी एयर टाइट. अगर एयर टाइट नहीं होगा तो एयर कहीं ना कहीं से घुस जाएगी, एयर घुस जाएगी तो वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा. Okay, ma'am. If it is finished, they can have a break of 10 minutes. जब तक मोनिका आएगी, तब तक you people can interact. हाँ, आप लोगों के पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं जैसे आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हो. मैंने आपको जो आपके टेक्स्ट बुक्स में एक्सपेरिमेंट लिखे हैं वो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बट उसके अलावा आप बच्चों के साथ क्या प्लान कर सकते हो और सिंपल वो आपको बताए हैं.
तो आई होप कुछ नया आपको लगा होगा इसमें. Yes. Thank you. Ma'am, can you show me the root one experiment? Thank you, ma'am. ये भी बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है मैम. Exactly. जैसे आपने ब्लो किया कार्बन डाइऑक्साइड, आपने जब आप ह्यूमन दिखा रहे हैं कि ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, आप ब्लो कर रहे हो. जब आप दिखा रहे हो कि प्लांट एक्सेल कर रहे हैं, तो आपने बस उसकी रूट्स डाल दी. डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा ब्लोइंग से, क्योंकि How long this experiment will take? मैम इसमें लग जाता है आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है. Okay, ma'am. पूरा डिसऑर्डर नहीं, लेकिन वही चीज है कि अगर आप बहुत डाइल्यूट एल्कली लेते हो, जितना डाइल्यूट लोगे उतनी जल्दी हो जाएगा. Exactly. हाँ. कार्बोनिक एसिड बनना है उतना टाइम लगेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने में जितना टाइम लगता है. ठीक है. This one is too good, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मैम. So we will have a 10 minutes break. 12 बजे मोनिका जी आ रही है दोबारा. 8 minutes are there, so anybody can take a break. या डॉक्टर साहब है ही है यहाँ पे, तो वो कैन इंटरेक्ट. मैं यहीं पे हूँ सर. किसी का कोई क्वेरी है? हाँ. प्रोजेक्ट्स आप इसमें से कुछ डिजाइन कर सकते हैं बच्चों के लिए. एक मैंने आपको बताया कि आप दे सकते हैं बच्चों को एक ये करने के लिए. दूसरा, आप इसके ऊपर भी डिफरेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि डिफरेंट प्लांट पार्ट ले लिए, एक ही प्लांट के 2-3 पार्ट ले लिए. मतलब आपने एक प्लांट चुना, ठीक है, कोई भी एक हेज प्लांट, आप हिबिस्कस ले लीजिए. हिबिस्कस बहुत कॉमनली ग्रो करता है. आपने हिबिस्कस का फ्लावर देख लिया, हिबिस्कस के लीफ में रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्टडी कर लिया, और आपने हिबिस्कस की स्टेम में रेस्पिरेशन स्टडी किया. तो 3-4 पार्ट आपने एक ही प्लांट के ले लिए. ठीक है, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट लंबा हो जाएगा उससे, कि आपने डिफरेंट पार्ट लिए और आपने हर बार आपने राइज चेक किया कि 5 मिनट में हर प्लांट मटेरियल में कितना राइज हो रहा है. ठीक है, तो उससे आप ये बता सकते हो कि सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन प्लांट के कौन से पार्ट में होता है. स्टेम में होता है, लीफ में होता है, रूट्स में होता है. तो अगर बच्चे तो अभी ये छोटे हैं आपके पास, तो बहुत ज्यादा उनको प्रोसेस के बारे में नहीं पता होगा, बट फिर भी एक कंपैरेटिव चार्ट वो बना सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो आप मुझे बताइए कि हाथ में जितना रेस्पिरेशन हो रहा है, हाथ के सेल्स में भी रेस्पिरेशन हो रहा है. क्या ये इसमें ज्यादा रेस्पिरेशन हो रहा है या फिर ब्रेन के सेल्स में ज्यादा रेस्पिरेशन हो रहा होगा? ब्रेन, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एटीपी चाहिए, तो इसलिए ब्रेन को ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होती है ना. तो इसी तरह प्लांट्स के भी डिफरेंट ऑर्गन है जहां पे एक्टिविटी ज्यादा होनी है, जिस भी ऑर्गन को ज्यादा काम करना है. जैसे रूट्स को एब्जॉर्ब करना है, पानी एब्जॉर्ब करना है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने हैं, तो रूट में रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होता है काफी. लीव्स को फोटोसिंथेसिस करना है, ठीक है, वो वहीं पे कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं और वही कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है, तो फिर लीव्स में भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन काफी अच्छा होता है. लेकिन अगर हम स्टेम की बात करें, तो स्टेम का काम है सपोर्ट करना. उसके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है जो कि डेड टिश्यू होता है. तो अगर टिश्यू ही डेड है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, तो स्टेम के अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम आएगा. But if you like green stem, हाँ जी मैम, green stem ले सकते हैं. डेफिनेटली आप कंपेयर कर सकते हो ग्रीन स्टेम और मेच्योर स्टेम को. तो वहां भी आप बच्चों को दिखा सकते हो कि ग्रीन स्टेम में रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा आएगा, क्योंकि वो एक तो ग्रीन टिश्यू है, दूसरा वो ग्रोइंग टिश्यू है. ठीक है, तो उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा आएगा. जबकि आप मेच्योर ब्राउन कलर की स्टेम्स ले रहे हैं, लोअर पार्ट से ले रहे हैं, तो उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत कम आएगा. तो यू कैन डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन इट, कि किसी भी पार्ट को, 2 पार्ट को कंपेयर करके आप एक अच्छा सा डिस्कशन बच्चों के साथ कर सकते हैं कि क्यों ज्यादा आ रहा है और क्यों कम आ रहा है प्लांट्स में. आप एक एक्सपेरिमेंट ये भी कर सकते हो कि आपने, जो हमने लीव्स की बात करी, एक बार कवर करके आपने रेट ऑफ रेस्पिरेशन निकाला और एक बार बिना ब्लैक चार्ट पेपर से कवर करके, तो फिर उससे बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, इसलिए ये राइज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे. आप बताइए, आप लोग कुछ और मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं इसमें, सोचिए थोड़ा.
आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर हम KOH नहीं डालें, इसमें सोडा लाइम नहीं डालें तो क्या होगा, तो क्या राइज होगा या नहीं होगा। उनको बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है ये समझ आना चाहिए यहाँ पे। तो आप 2 एपरेटस ऐसे भी बना सकते हो, एक में KOH डाल के और एक बिना KOH के। तो वहां पे बच्चा कंपेयर कर सकता है कि जिसमें KOH है उसमें राइज हो रहा है क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। We can use small insects also, but in that case our apertures will little bit changed. I mean KOH has to be kept somewhere else. हाँ I know, but in plants also what we do, आप देखोगे यहाँ हमने कॉटन प्लग लगाया हुआ है। हाँ, कॉटन प्लग का एक रूल ये भी होता है क्योंकि KOH करोसिव होता है, तो वो प्लांट को डायरेक्ट टच ना करे। ठीक है, तो ऐसे जैसे आप इंसेक्ट के लिए कह रहे हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल जो पोरस हो ताकि एयर जा सके। अगर कॉटन प्लग से इंसेक्ट रुक जाते हैं तो वो भी आप वहां लगा सकते हो। Cardboard we can put, yeah. या यू कैन डू दैट। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप इंसेक्ट्स के लिए भी, छोटे इंसेक्ट्स के लिए करें तो वो भी कर सकते हैं, बट उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होगा। प्लांट्स को कंट्रोल करना आसान होता है। Ah, true. So tomorrow morning I'll be continuing this topic, okay, because I think Monica ma'am will be taking up now. So we'll further talk about the other experiments which are which you will be performing in 6th to 8th standard, or from I'll check for 4th also. If there is something new, I'll also talk about that. Ma'am, this will continue till 5th of March, no? Some other topic, na ma'am? Some other topic. I will continue this word of living because it will contain maximum of your practicals. जितने भी आपके बायोलॉजी के प्रैक्टिकल हैं, लाइफ साइंसेस के, वो इसमें वर्ड ऑफ लिविंग में आ जाएंगे, और मैं इनके साथ दूसरे एक्सपेरिमेंट भी करेक्ट करती रहूंगी। Okay, ma'am. ठीक है, मेरा एम यहाँ पर है कि प्रैक्टिकल्स जो आप लोगों को करवाने हैं वो क्लियर हो जाएं अच्छे से, उनका आपको प्रिंसिपल समझ आना चाहिए। बच्चा अगर बीच में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको जवाब दे सको। तो इसलिए अगर आप भी मुझसे जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे बीच में, तो एक क्लैरिटी और अच्छी होती जाएगी उसके बीच में। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने स्कूल में परफॉर्म किया होगा, बट परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि जब हम बुक में पढ़ते हैं तो बड़ा आराम से लग जाता है कि हो जाएगा, बट जब हम परफॉर्म करने पे आते हैं तब हमको पता चलता है कि इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे। तो वो सब भी आप मुझसे पूछ सकते हो। Ma'am, only biology. Only. या ये लाइफ साइंस का है ना, Okay. 3, 4, 5 को। Monica hasn't joined as yet. She will be joining. तो तब तक ब्रेक ही समझ लो उसको, इंटरेक्टिव। मोनिका मैम इज जॉइनिंग। हाँ, I have joined finally. Actually मैं ना कॉलेज गई थी तो वहाँ पे इंटरनेट का बहुत इशू है डॉक्टर रोमिला, so हाँ, bad. मैंने आपको बताया था मैम, इसलिए आई प्रेफर्ड दिस टाइम कि मेरा घर से लेके अब मैं कॉलेज चले जाऊंगी। हाँ, मेरे को था कि I would be able to manage वहाँ, फिर ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी, that's so different. चलिए, let's. Okay, I again want to thank Dr. Romila for her presentation, and I am now taking after this session after her, because we had a lot of hiccups in the morning session because of the technical glitches, and I'm sure now nothing will go wrong. Thank you, Dr. Romila, for your
participation in this very important workshop, which is meant for school students, school teachers. I hope the teachers enjoyed the session. Romila has discussed respiration with you all, and I thought I'll be talking about the water. In the morning itself, I gave you some insights about why water is important. I have chosen water as my topic of discussion to for today's session because it is a very important solvent. Water can exist in liquid form, it can exist in solid form, it can exist in the vapor form. So if one has to teach about the states of matter also to students, water is a very interesting substance or a material to talk about. Again, why water? Because 70% of the Earth's surface is covered by water. Even the main constituent of the body of living organisms, including humans, is water. We have water. We need water for various purposes. We drink water. Water is a important material for, actually, if we look at it, for food, because photosynthesis will not happen. Plants will not be able to manufacture their own food if there is no water. Water is the raw material for photosynthesis. So as I told you in the morning, water is life. I consider water as life. And those people who are talking about, settling in other planets or life on other planets, buying land on other planets, they are talking about life on Mars because there have been some incidents where people feel that water can be traced. So water, because it is necessary for life to exist, I chose water as a topic. And students at the primary level, secondary level, they have information about rivers. They have information about various sources of water, like ponds, lakes, etc. So I thought I can correlate this subject to life as well as how various other disciplines are related. And because the school teachers also want to engage students, and school teachers also should create interest. They need that students should get interested in science, so that they pursue science at higher levels. So they can also do lots of activities with water to make students understand the functions of water, to make students understand the difference in the quality of water. So I'll share my presentation. Can I this says that just 1 minute, ma'am. हाँ, ये कह रहा है डिसेबल किया हुआ है. Yes, ma'am, we try. Okay. So I'm sharing my presentation. I hope it is visible to you all. Is the presentation visible? No, it's not, Abhi. No, ma'am. Yeah. Yeah. Yes, it's visible. Okay, thank you. So the first thing which I am taking up is that water is the most essential element of life, and it is present everywhere. It is capable of being in various forms. As I told you, it can occur in solid form, it can occur in liquid form, it can occur in gaseous form, vapor form. And now this water you can observe in nature also changing from one form to another. आप देखो, अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हो
तो आप देखते हो कि विंटर्स में वहां फ्रीज हो जाता है अपर सरफेस ऑफ द वाटर। आप में से कई लोग विंटर्स में शायद कभी कश्मीर गए होंगे, तो आप डल लेक देखा होगा, तो डल लेक पूरा फ्रीज हो जाता है ऊपर से, क्योंकि ठंड बहुत होती है। वाटर एट लोअर टेम्परेचर्स चेंजेस इट्स फॉर्म टू आइस। इतना हार्ड हो जाता है आइस की वन कैन इवन वॉक ऑन द शीट्स ऑफ आइस देयर, फ्रोजन शीट्स ऑफ आइस ऑन द लेक्स। You must have seen that in a water body in summers the water recedes, water कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज इवेपोरेशन होता है वाटर का। वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स एंड इट इवेपोरेट्स इन द एयर। सो वाटर इज ऑल्सो वन सब्सटेंस विच इज कंटिन्यूअसली गेटिंग साइकल्ड, एक जियोलॉजिकल स्फीयर से दूसरे जियोलॉजिकल स्फीयर में, दूसरे जियोलॉजिकल स्फीयर से तीसरे। देखिए वाटर को हम वाटर के जहां जहां वाटर एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज द लेयर ऑफ द अर्थ और रीजन ऑफ द अर्थ which has water. Then lithosphere. Lithosphere is land के ऊपर के plants etc. Then atmosphere. Atmosphere is the air surrounding us. So water also can move from one हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से लिथोस्फेयर में जाता है, लिथोस्फेयर से फिर हाइड्रोस्फेयर में, और ये सर्कुलेशन चलता रहता है। सिर्फ वाटर ज्योग्राफिकल रिलिम से ही नहीं जाता, वाटर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी मूव करता है। अब देखिए प्लांट्स वाटर ले लेते हैं फ्रॉम दी सॉइल, प्लांट्स एब्जॉर्ब दी वाटर फ्रॉम द सॉइल and that water is getting transpired. Evaporation और transpiration एक ही जैसी चीजें हैं। Evaporation का मतलब होता है कि सीधा वाटर गर्म जब हो जाता है तो गैसियस फॉर्म में टर्न होता है और हवा में चला जाता है। Transpiration के लिए प्लांट्स का होना जरूरी है। When evaporation takes place through plants, it's called transpiration. So we have to understand the difference. Transpiration is a biological process because here living systems are involved. Plants are involved to evaporate water. But evaporation is a physico-chemical phenomena जहां पे water का state change हो रहा है through heating. ठीक है, इतना समझ आ गया आप सब लोगों को? So हमें ये सारी चीजें भी, जब हम वाटर के बारे में बात करते हैं तो वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट वाटर इज कंटिन्यूअसली बीइंग साइकल्ड, and because of this reason, because water is continuously being cycled for many years, we considered water to be a perennial resource. Water is an important natural resource. It was considered to be an important perennial resource जो हमेशा होएगा ही, रहेगा ही, क्योंकि साइक्लिंग होती रही। बट अभी क्या हुआ है? We have impacted the hydrological cycle. We have affected the water cycle. Can any of you tell me how? How have we impacted the water cycle? How have we affected the water cycle? How humans have fiddled with the water cycle? कोई मुझे कह सकता है? Any one of you? By cutting the forests. Yes. Deforestation reduces transpiration. Yeah. Anyone else? Water bodies reduced. Yeah, very good. See, at one point of time, if you see district Ghaziabad or a district Meerut or Greater Noida or even other parts of National Capital Territory of Delhi, including Delhi, we used to have lots of lakes here. We used to have lots of natural water bodies, ponds and lakes, and a Yamuna river had many tributaries flowing across various parts in the western UP. But अब आप देखो कि those tributaries, distributaries have converted into nalas, and most of the lakes have been silted. Most of the ponds have been silted. उनको पहले तो उनको एक वेस्ट डंप की तरह यूज करा गया, फिर धीरे धीरे उनमें सिल्टेशन हो गई, वो बढ़ते गए और अब वो लेक्स ही नहीं है। लोगों ने
naturally भी भर दिए only lakes को, because they converted lakes into landforms so that they can sell them off for construction of buildings. So we have to understand that the natural cycling of water, जो मैं कहती हूँ कि atmosphere से lithosphere में और lithosphere से hydrosphere में वापस और hydrosphere से, ये जो natural cycling है, ये कुछ हद तक हमने interfere किया हुआ है इसके साथ, because evaporation एक तो नेचर में रिवर्स से होता था, लेकिन प्लांट्स भी लिथोस्फेयर के वाटर को, सॉइल के वाटर को थ्रू ट्रांसपिरेशन एटमॉस्फेयर में वापस भेजता था, और फिर एटमॉस्फेयर में उसकी कूलिंग होती थी और फिर वापस रेनफॉल के फॉर्म में वो आ जाता था. लेकिन अब क्या हो गया, अब हमने बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस, बिकॉज ऑफ द fiddling of the nature, because there are many problems that are taking place. So because of that, we have affected the water cycle. Our sources of water, there are various sources of water, as I said, rivers, precipitation, natural rainfall, ponds, lakes, and lot of the rainfall which comes. मैडम कैन यू, मैडम आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं क्या प्लीज? मैंने म्यूट कर दिया उनको, आप कंटिन्यू. अच्छा, सो दीज जो हमारे नेचुरल पेरिनियल सोर्सेज ऑफ वाटर भी थे, जो हम और बहुत सारा जो वाटर है वो दैट गोज टू द ग्राउंड, इट इज स्टोर्ड इन द ग्राउंड वाटर एक्विफर्स. जब बारिश आती है, कुछ पानी तो सरफेस फ्लो में चला जाता है, बहुत सारा पानी नीचे की सॉइल की लेयर्स में चला जाता है, जो पानी रूट्स के थ्रू वापस आता है, लेकिन काफी सारा पानी इट परकुलेट्स डाउन, एंड दैट वाटर इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर, एंड दैट ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड इन एक्विफर्स. उनमें रहता है वहां पे नीचे. जब बारिश होती है, काफी सारा पानी तो फ्लो कर जाता है, काफी सारा पानी कुछ लेयर्स तक जाता है जहां तक प्लांट्स के रूट्स होते हैं, तो रूट्स अपने रूट हेयर्स को बेच के वहां का पानी अपने अंदर ले जाते हैं फॉर वेरियस थिंग्स. और जो काफी सारा पानी होता है वो नीचे चला जाता है, इट गोज टू द डीपर लेयर्स ऑफ द अर्थ, इट गोज टू द डीपर लेयर्स ऑफ द ग्राउंड, एंड देयर it gets stored as groundwater. And in many places, especially in the Ghaziabad, Gurgaon area, we are harnessing this groundwater as well. तभी वहां का पानी थोड़ा खारा होता है, तो ग्राउंड वाटर को भी हम यूज करते हैं वापस अपने कंजम्पशन के लिए, अपने इसके लिए. तो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है पूरे वाटर साइकिल में. सो as I said, that there are various sources of water and various forms of water, liquid form, solid form, vapor form. Water changes its form through various processes. Water moves from one geographical realm to another geographical realm through various processes. This is important. The processes which are involved in water cycling. Can anyone tell me what are the processes involved in water cycling? Evaporation. Yeah. Condensation. Yeah. Precipitation. Precipitation. Yeah. Collection. So let's get to those sources of water. See, as I told you, we have various sources already which we know, but 94.2% of the water, total water which is available, is saline. It is in the form of the saline water in the oceans and seas. Only some amount of water which is there is in the freshwater bodies like rivers and ponds. Lot of the water is actually in frozen form, in the form of glaciers. I have given 1.38% is in the form of glaciers, and 4.42% of the fresh water is what is available. Though हम कहते हैं कि हम एक earth is a water planet बोलते हैं earth को, and 70% of the earth's surface is covered by water, but still we are
not having enough water, because major portion of the water is saline. Major portion of the water cannot be used for as a resource which we talk about. And that is why जो scientists है वो बहुत काम कर रहे हैं कि ये जो water है, ये जो 94.2% water है, उस water को हम किसी तरह से desalinization, उसका salt निकाल के बहुत सारी फिजिको केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज करके सब लोग टेस्ट कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि वाटर का इतना थोड़ा सा फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस इज नॉट ओनली ट्रू अबाउट इंडिया, it is about the entire world, that water is a scarce, gradually becoming a scarce quantity. It is not an abundant resource as it used to be few decades ago. There are people in the world who are facing severe water crisis. पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, बट राजस्थान में कुछ एरियाज में जो men है, they have to get married to 2 to 3 females, not because the man wants to get married to have polygamy. उस आदमी का मन नहीं होता कि उसकी बहुत शादी 2-3 शादियां हो, वो अपनी वाइफ से प्यार करता होता है, बट वहां पे ट्रेंड बन चुका है कि एक लेडी की शादी इसलिए होती है पॉलीगैमी, एक किचन संभालती है, दूसरा पानी लाती है, क्योंकि उसका पूरा दिन पानी लाने में निकल जाता है. एंड दिस इज अ फैक्ट. I will show you a YouTube video where in some families in Rajasthan, the men are forced to have 2 to 3 wives in order to meet the requirements of water. It is not only true about India. In lots of other developing countries, especially in South Africa, the water crises are looming large. बहुत problem है water के साथ वहाँ. लोगों को बहुत चलना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है वाटर के लिए, और तब जाके उन्हें पानी मिलता है. सो यू मस्ट as teachers, you must inculcate in your students the value for water, how much ecological value is assigned to water. Not only ecological value, water has economic value also. आप देखो, अगर पानी नहीं होगा तो आपकी जो मिले हैं, जो गांव में चलते हैं चक्के पानी के फोर्स से, वो नहीं चल पाएंगे, आटा नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत हाइड्रो पावर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, आई मीन एनर्जी. अगर पानी के थ्रू अगर हम एक मिल चलाएं, वो एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा अच्छा है देन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या अदर फ्यूल के थ्रू किसी मिल या मशीन को चलाते हैं. तो वाटर अपने आप में एक एनर्जी का भी स्रोत है. इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो. the velocity of the movement of the water generates large amount of energy, and this energy is so useful. This energy is cheap, and this energy is environmentally suitable, environmentally sustainable source of energy. So valuing water is important, not only because it's an important thing for keeping the life alive, it is also important for keeping the economic activities alive. It's a ecologically important resource. So we have to we can tell our students off and on about the value of water. As I said, water is also the reservoir of geothermal energy. It is even oceans में जो tides उठती हैं, उन tides को भी हम harness करते हैं to generate energy. Tidal energy is generated through the movement of water in oceans, right? So now, as I just have told you that a lot of water goes to the ground. What happens to this groundwater? This groundwater is stored in recharge wells or aquifers. अभी भी काफी सारे एरियाज में राजस्थान, मध्य प्रदेश,
और जहां जहां पे पानी, जहां ज्यादा बरसात नहीं होती है वहां पे वी हैव वेल्स। पहले तो हर जगह होते थे, दिल्ली में भी बहुत कुएं होते थे, कुएं से पानी निकलता था। अब म्युनिसिपैलिटी का वाटर अवेलेबल है तो कुएं अब सील हो गए हैं, लेकिन काफी एरियाज में अभी भी हम ग्राउंड वाटर को हार्नेस करते हैं थ्रू वेल्स। अब तो ट्यूबवेल्स लगाए फिर ग्रेजुअली, क्योंकि अब वेल्स में लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पानी निकालने के लिए, और फिर वेल अब कई बार एक सोर्स ऑफ डेंजर भी बन चुका है, क्योंकि बच्चे बच्चे चले जाते हैं लोग जब खाली वेल रहता है। तो इसलिए वी हैव सील्ड दोज, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज अभी भी कई कई जगहों पे वेल्स आर यूज्ड टू हार्नेस द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर is important because it is a source of water which you can use in the time of crisis. But अभी ground water भी कम हो रहा है। क्यों हो रहा है ground water कम? Why is ground water depleting? What are the reasons for depletion of groundwater? Excess urbanization, less percolation, less rain. Very important. I am so happy, Miss Poonam Vadera ji. See, there are many reasons. Of course, rains are infrequent. Rains are erratic. बारिश अजीब से होती है। जैसे पहले एक प्रॉपर सीजनल साइकिल्स होते थे कि अब गर्मी होगी, फिर बरसात होगी, फिर ऑटम आएगा, फिर सर्दी होगी। लेकिन अब सीजनल साइकिल्स में कभी कभी मार्च में ठंड पड़ने लगती है, कभी कभी बहुत दिसंबर में इतनी गर्मी पड़ गई एक दो दिन। तो दीज आर कॉल्ड एज इरेटिक वेदर फिनोमेना, क्योंकि हमने ह्यूमंस हैव इंटरफेयर्ड सो मच विद द नेचर दैट जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, और उससे ना जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती थी वहां पे अब कम बारिश होने लगी है। और इट इज द बारिश का पानी, इट इज दिस रेन वाटर विच percolates down and gets stored in the ground. So one of the reasons which you pointed out is that less or erratic rainfall. बहुत ज्यादा बारिश हुई, मूसलाधार वर्षा हुई तो वो रन ऑफ में चली जाती है। अगर धीरे धीरे बारिश हो तो वो सीप इन कर जाती है। तो बारिश का पैटर्न अपना चेंज हो गया। दूसरा, जो ग्राउंड कवर है वो कम होता गया। ग्राउंड वेजिटेशन जो होती है ना, घास जो ग्राउंड के ऊपर की वेजिटेशन होती है, हमने हर जगह सीमेंट चढ़ा दिया। किसी ने बोला था कंपैक्शन, वन ऑफ यू पॉइंटेड आउट, वी हैव कंपैक्टेड द सॉइल। हमने सॉइल को सॉइल नहीं रहने दिया, हर जगह कंक्रीट लगा दिया। पार्कों में कंक्रीट, रास्तों पे तो लगाना ही था कंक्रीट क्योंकि व्हीकल चलते हैं, अपने घरों के आसपास कंक्रीट ताकि हमें सफाई ना करनी पड़ी। हर जगह कंक्रीटाइजेशन कर दिया। तो उस कंक्रीटाइजेशन के कारण क्या हुआ, जो रेन वाटर था वो सीप नहीं कर पाता। ठीक है, एक वो लॉस, और धीरे धीरे सॉइल के थ्रू, पोर्स के थ्रू जो पानी ग्राउंड वाटर में चला जाता था वो एक नेचुरल प्रोसेस था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने कंक्रीट लगाया। अर्बनाइजेशन, जहां पहले फॉरेस्ट होते थे जो वाटर साइकिल को मेंटेन करते थे, forests have been replaced by agricultural fields, and agricultural fields have been replaced by buildings. Even agricultural fields तक भी ठीक था क्योंकि फील्ड में से भी पानी जब हम इरिगेट करते हैं ग्राउंड वाटर तक जाता ही था। लेकिन अब हमने fields have changed into concrete jungles. So क्या हो गया, उससे ग्राउंड वाटर कम होता गया। So another reason for the loss of groundwater resources is this. Next, because वाटर के पैटर्न को हमने चेंज कर दिया। नंबर ऑफ वाटर बॉडीज जो थी, दे हैव बीन सिल्टेड, वेजिटेशन इज नॉट इनफ टू एब्सॉर्ब द वाटर, द कंक्रीटाइजेशन हैज हैपेंड, ऑल दिस हैज आल्सो रिजल्टेड इन चेंजेस इन द वाटर साइकिल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि ग्लोबल वाटर साइकिल आपके बहुत सारी बुक्स में है, इवन 7th क्लास की बुक में है वाटर साइकिल, एनवायरमेंटल साइंस की बुक में है वाटर साइकिल। तो देयर आर वेरियस प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन वाटर साइकिल।
as we discussed, evaporation. Evaporation is the change of water into water vapor through physical process. Condensation, when this water vapor settles in the atmosphere on dust particles, फिर ये ठंडा होने लगता है. ठंडा होने को कंडेंसेशन बोलते हैं. अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हुआ तो water vapor will change into liquid. If it is extremely cold, the water vapor will change back into solid form. So जो पानी दरिया में था, it changes into vapor form, and those vapors are gaseous. They settle down on the dust particles in the atmosphere, and if the temperature of the atmosphere is low, the water vapor will change into water, liquid form. But if the temperature is very, very low, water vapor will change into the form of ice, etc. And then अगर अब इसका वेट इतना ज्यादा होता है कि एयर होल्ड नहीं कर पाता, एंड फिर होती है बारिश. दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. जब बारिश होती है तो काफी सारा पानी रन ऑफ हो जाता है, वॉश अवे हो जाता है. कुछ चला जाता है और कुछ सर्कमस्टेंट होता है, चेंज होता रहता है एडवेक्शन के थ्रू, पर्कुलेशन के थ्रू. फिर there is a process called advection जिससे water uptake वापस करते हैं हम into the air. So this is what is the water cycle. So we have water in oceans, we have water in rivers, we have water in streams, and this water is getting evaporated, and then it is getting condensed, it is getting precipitated, it comes back, it percolates, and through advection, through recharging, through the plants, etc., it gets back into the earth, right? Let's understand each of these processes one by one. We understood that evaporation is the movement of water molecules from the surface into the atmosphere. So when it is when water gets evaporated from streams, lakes, oceans, we call it as evaporation. And when water is lost from the soil or through the leaves of the plants, we call it as transpiration. Water loss from animals, अगर हमारी बॉडी में से भी पसीने छूटते हैं, animals के भी पसीने छूटते हैं. Water loss from the animals is called perspiration, right? Even body के अंदर का पानी भी evaporate होता है in the form of perspiration. So again, I tried to draw this diagram myself. This is a natural ecosystem or a natural forest, you may say, a natural biosphere region. So here you can see there is vegetation, there are lakes, and ये soil के अंदर का groundwater है. और अब क्या है, ये जो oceans का water है, lakes का water है, rivers का water है, ये evaporation के through atmosphere में चला जाता है, बादल बनते हैं, clouds, condensation होता है, condensation के बाद rain आती है, evaporation हो गया. कुछ water जो ग्राउंड में था वो पर्कुलेशन के थ्रू ऊपर जाता है, ट्रांसपायर होता है, और फिर कंडेंसेशन होता है और फिर वापस आता है, राइट? सो कंडेंसेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर back into the liquid droplets in air, and precipitation is the falling down of water in the form of water, or even sometimes hailstorm, even sometimes snow. Okay. So precipitation is the driving force for water cycle, because when water rises, it is cooled, and beyond that particular temperature, it forms the clouds, and then the water falls back in the form of droplets, right? So I will not go into the details. Now, you see the water has very interesting properties. There are lots of materials which absorb water, and there are lots of materials which repel water. कुछ चीजें पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ चीजें पानी को रिपेल कर देते हैं, वो पानी को नहीं एब्जॉर्ब करते. प्लास्टिक है, टेफ्लॉन है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस. सो कभी कभी हम बच्चों को क्लास में ये भी एक्सरसाइज देख सकते हैं
Can you differentiate between, आप उनको 2-3 materials दो, which of them can absorb water and which cannot absorb water, repel water? So students can make the list. You can use this as an activity sheet and tell them to distinguish different materials found around you, around the campus, अपने school में, which are hygroscopic and which are hydrophobic. ये एक practical हो सकता है, ये activity हो सकती है. अब ये again मैंने बताया कि जो जब condensation होती है तो water precipitation के form में hail, frost, snow, rain, dew, fog. They are all various forms of precipitation depending upon the temperature. अगर temperature बहुत कम हुआ तो पानी, बूंदे, rain. अगर थोड़ा और temperature कम हो गया और थोड़े windy भी है तो hail. ठीक है, ये अलग अलग forms of precipitation. So I have given cloud. Cloud is any concentration of gas, liquid droplets or solid particles. Hail, hailstorm, जिसको क्या बोलते हैं, कल क्या बोलते हैं हिंदी में hail को? ओले. ओले, हाँ. Precipitation when forms into the lumps of ice. Frost, thin ice crystals, small ice crystals like needles. Fog, जो धुंध आती है, condensed water vapor, that is धुंध. Fog, condensed water vapor, right? Dew, droplets of water which are found on the leaves in early morning. Snow, precipitation in the form of hexagonal crystals, जो flakes की तरह नीचे आते हैं. Snow. Rain is liquid and it has diameter of 0.55 meter. And drizzle, बोलते हैं ना, आज drizzle हो रही है. Rain तो बड़े बड़े drops. Drizzle, when the diameter of the water droplet is below 0.5 millimeter, it is called drizzle. So even the precipitation can come in various forms. I saw this was a part of your syllabus. What are the various forms of precipitation? Hail, frost, fog, dew. I have shown here also. You can see the relative decrease in the size also of the particles. Okay. Now, कितना पानी परकोलेट कर जाएगा, कितना पानी सॉइल के अंदर जाएगा और कितना वॉश आउट होएगा, वो डिपेंड करता है वेजिटेशन पे. जितना अच्छी वेजिटेशन होएगी उतना अच्छा परकोलेशन होएगा. जितनी रिच फॉरेस्ट या जितना अच्छा कवर होगा, ग्राउंड कवर, उतने अच्छे से परकोलेशन होगा. सिर्फ परकोलेशन डिपेंड नहीं करता इस पे कि वेजिटेशन कवर कितना है. परकोलेशन also depends upon the type of soil, right? Soil कैसे प्रकार की है उस पे भी percolation depend करता है. I used one very important process, advection. शायद ये process आपके उसमें नहीं दिया गया है. Advection is the movement of water in solid, liquid or vapor states through the atmosphere. Without advection, water जो evaporate होता है, that cannot precipitate over land. So advection is a very important interface. It is the movement of water in solid, liquid or vapor states through the atmosphere, right? So I hope you have understood. I'm sure you knew it already, but just to make it more interesting, I tried to give you some figures and also this activity you can discuss with the students, that give them 10 materials and tell them to distinguish between how many materials out of the 10 are hygroscopic and how many are hydrophobic. Phobia बोलते हैं ना, phobia, repel. मुझे पानी से phobia है. Hydrophobia, कि मेरे को पानी से डर लगता है. तो जिसको पानी से डर लगता है वो पानी से दूर भागेगा. Substances, वो उनको absorb नहीं करेगा. Those are called hydrophobic substances. So before I move to another aspect, is there any question till now? Okay, if there are no questions, अभी तक जितना हमने discuss किया, can you
please tell me, besides the activity I discussed with you, hydrophobic and hydrophilic, what other activity can you plan with the primary school students from the information which we discussed just now? Yeah, Beshali, can you comment? Form of precipitation. Yeah, yes. Making of water, explaining water cycles through flashcards by the students using cotton, cardboards, etc. Whatever the creativity they can. So we already are doing like art integrated projects and all that. So in that case, we can definitely avail this topic. Yeah, very nice. See, if you have to incorporate the scientific element in it, you can first of all tell them also to distinguish between the solid, liquid, and gaseous forms of water and note down whatever observations they can make in the classroom, right? Yeah, Then- molecular arrangement of on the states of matter we have Yeah. been. Yeah, they Yes. can do using thermocol balls. They can arrange the balls in such a manner so that they can depict where the molecular arrangement is closer. Is it solid or liquid or whatever? Even you can tell them to change the water form in the classroom. Tell them to keep the water in the freezer and Yeah. boil it and look at how keep a lid on it. In the biology classroom you can also design a small experiment by which you can take two pots, and in one pot you put the one kind of a soil. Maybe you put the sand, and in another pot you put clay. As I told you that the percolation of the water is not only dependent upon the vegetation cover, it can also depend on the soil. So you can tell them to pour a known amount of water in one pot. मान लो आपने एक पॉट लिया, उसमें आपने सॉइल भर दी और उसमें आपने एक मिर्ची का पौधा लगा दिया which you can grow easily, और पी का पौधा लगा दिया which grows very fast, annual plant है, और एक साइसर का पौधा, चने का पौधा लगा दिया. So in both the pots you put the same amount of soil. In one pot you put sand, more of sand, and in another pot you put more of clay, and simultaneously start watering the plant and see in which pot percolation is happening more. So students can relate that soil is also an important component. The nature of the soil, the type of the soil will play an important role in percolation of water, right? Yes, yes. Another activity, because I told you the vegetation cover is directly proportional to the percolation. Yeah, soil erosion. Yeah, आप हाँ exactly. आप देखो जहाँ पे vegetation है वहाँ पे flow के साथ पानी, tell them to put the water through force through a pipe, and in another area where there is vegetation, use the same force to spread on the soil, and see in which erosion is taking place and in which area erosion is not taking place. Runoff किसमें हो रहा है किसमें नहीं हो रहा. So they can, these are some experiments, low cost and less intensive, which by this the students will also gain some experiential knowledge, which is important. You can plan, you can give, different types of seeds to each student and tell them to grow in a same pot. You buy 10 pots of same size in your school, and or to all 10 students you give different seeds. For one you give mirchi, for another you give pea, to some another you give wheat, and tell them you can teach them what is the requirement of a plant for the water. किस पौधे में जल्दी पानी की जरूरत पड़ती है, किस पौधे को जल्दी सिंचाई की जरूरत पड़ती है. They will note every day कि soil dry हुई या नहीं,
wheat में कितने दिनों में dry हुई, इसमें कितने दिनों में dry हुई, वो कितने intervals पे वो हमें water करना पड़ेगा. So you can even engage them. हर pot को आप एक बच्चे का नाम दे सकते हो and design such experiments for water. Right. Thank you, ma'am. It's a nice idea. Thanks, Atan. You can also do, you keep one plant and don't give water to it. And to other plant, you keep on giving water at regular intervals and they can compare the plant health. Yeah, drooping down. This can tell them why we often say that water is life, water is elixir for life. Again, then we can also, plan activities such as, tell the different students to get water from different, अलग-अलग घरों से आ रहे होंगे, get water samples. And just by looking at the pH paper, litmus paper लेके, आप अलग-अलग water samples का pH बच्चों से दिखवा सकते हैं 7th 8th grade के. लिटमस पेपर मिलता है, उस लिटमस पेपर को डिप ही तो करना है एंड इंडिकेटर से देखना है. लो कॉस्ट, 2 रुपया 2 रुपीज का पड़ता है आपका पीएच मीटर, पीएच पेपर, लिटमस पेपर, एंड यू कैन डिप इट इन द वाटर एंड कंपेयर द पीएच ऑन द scale. So I just wanted that when we are discussing water in the class, for these students, we can make this topic more interesting. I'm sure all the school teachers are doing a lot of hard work and they're really slogging, and even in the online mode during COVID, they have worked so hard. But give them some field experience, experiential experience. अब अगर हमें इसको और साइंस के एस्पेक्ट से एलिमेंट करना है, तो हम फ्लो ऑफ वाटर, स्पीड, किसी जगह किसी के घर के पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है नलके की, किसी की कम है, किसी का फ्लो कम आ रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो बच्चे को बोल सकते हैं कि नॉट विद, तुम देखो कि तुम्हारे घर में बकेट कितने मिनट में भर जाता है. अगर तुम फुल फुल स्पीड, फुल पूरा नलका खोल के आप देखो आपके घर में कितनी जल्दी बकेट भर जाता है, सेम वॉल्यूम का बकेट आपके घर में कितनी जल्दी भर जाता है. So measures water, you can relate to measurement in other science aspects also. Fine. We can also take water on one hand and milk on another hand and compare the जो मैंने बताया कि water is a universal solvent. So हम देखते हैं कि किसमें जल्दी, we can compare the mixing of the sugar or salt and milk and milk and water, milk and water and cola, water and something else, some other liquid, and tell them to appreciate the solubility of water kya hai, and why do we say that water is a universal solvent. So I guess these activities will reinforce these concepts of about water in them, right? Right, ma'am. Any other person, any other idea, any other experiment anyone else can share? Ma'am, for the purification also we are doing some activities like to explain purification of water. So we are doing some activities like sedimentation, filtration we are doing in classrooms. They are so easy activities which we are doing. Oh yeah, absolutely. Admissible, immiscible, we are explaining. That's very nice. And for the percolation, filtration inside the soil, we have taken different substances of different size, like sand, pebbles, cotton, different things we have taken. And then we are pouring water, dirty water, and then we can see at the end, we'll get some clean water. Not perfectly, but we are getting it. Yeah, so in filtration, that we happens. can explain them. Yes, ma'am. Another thing is, you can take them out also for a field trip. Where are you all from? Which schools? Noida, ma'am. Noida, ma'am. Can you name a few schools where? Mayur School, Noida. Okay. Chandran Public School, Noida, ma'am. Okay. Do we have teachers from government schools also here?
कोई सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं यहाँ पे? Yes, maximum. ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स। तो आप लोग के स्कूल्स कहाँ पे हैं लोकेटेड? तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये एक सारे स्कूल ग्रेटर नोएडा मतलब जिस गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट्स में, some are from Dadri, some are Noida, like that. Okay, so it will be very interesting that if you take students to near a water body, मतलब अगर आप एक लेक के पास, सूरजपुर लेक है ग्रेटर नोएडा में, या आप हिंडन के किनारे ही बच्चों को ले जा सकें, तो हम बच्चों को वाटर एज अ रिसोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रीइंफोर्स कर सकते हैं। बहुत बच्चों को यही पता है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं कि दैट वाटर कम्स थ्रू टैप। मैंने किसी से पूछा, वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, तो बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, उसने कहा टैप। आई वाज सरप्राइज्ड कि एक बच्चा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है वो कहता है वी गेट वाटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर इज टैप, बिकॉज द गाय हैड नेवर सीन एनी वाटर बॉडी इन नेचर। उसने रिवर नहीं देखा कभी, उसने लेक नहीं देखा कभी, तो उसको ये लगता है कि नेचर वाटर का सोर्स टैप है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इट विल बी नाइस दैट वन ऑफ द एक्टिविटीज विच यू कैन प्लान इन योर कैलेंडर, अब स्कूल वाले तो पिकनिक ले ही जाते हैं, व्हाई नॉट वन यू टेक देम नियर अ वाटर बॉडी। उस वाटर बॉडी के पास वो देखेंगे कि कुछ animals are drinking water. In the same water body, there are women who are washing on one end. There will be some people who are using water to irrigate their lands. उन्होंने वहां से पानी की वो निकाली होगी। तो हमें ये भी समझ आ जाएगा, बच्चों को ये समझ आता है कि वाटर का एक्चुअल सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ पे होता है, किन किन फॉर्म्स में होता है। बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता दैट रिवर एंड पॉन्ड में डिफरेंस है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम दैट रिवर इज अ फ्लोटिंग वाटर बॉडी, रिवर हैज कंटिन्यूअस फ्लो, बट पॉन्ड इज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज स्टैग्नेंट। ओके, and stagnant water bodies have stratification. तो जब आप एक रिवर में देखोगे तो रिवर के पानी में जनरली रिवर वाटर इज जनरली नॉट दैट डर्टी because it is continuously flowing. But if you go to a pond, the pond water gets stagnated and it becomes polluted after a point of time. So in order to reinforce the concepts like these, it is important to give them some kind of experiential learning also. You can also share some videos with them, which you, I'm sure, must be doing very often. So another thing, why I'm talking about all this is, when we take students to the sites, or when they see how people are using or abusing water, then you also teach them pollution, right? Pollution is also a part of their syllabus. So they can understand without cramming, without, they can tell you that these are the sources of pollutants for Hindon River in the area. These are the sources of pollutants in Surajpur area. So taking them there will also help them understand that the quality of the water which you see today is not adequate enough. It is not good for drinking purposes. So that is why we take tap water, not the water from the rivers or ponds. Earlier people used to drink river water. But now that we have polluted river water to such an extent, it needs some kind of treatment. It needs to be processed. It needs to be cleaned up before it can be consumed by humans. Otherwise, this water will have lots of chemicals that can be toxic to the health. So, students they will appreciate that
the water quality is getting deteriorated. And I think somehow they will also understand that they also are contributing to the pollution of the water. So large scale pollution of rivers, as we know, is caused by industries located on the river banks. Besides the industries, which is so clear, we also pollute water because we dump a lot of garbage inside the water. Our garbage sink is water. We treat these water bodies as sinks. We treat these water bodies as the recipients of these materials which are pollutants. For example, polythenes, trash, kitchen waste, everything is dumped inside these water bodies. So now, there are lots of restoration projects going on, river cleaning projects going on, Yamuna, Hindon, everywhere you see that the government is taking certain initiatives to clean up these water bodies, because a few years back, Yamuna was not even considered a river. It was considered to be a dead river. Why? What is the difference between a river and a dead river? Can any of you tell me why did I use these terms, river and a dead river? Dead river because of no organisms in it due to pollution. Yeah. So you know what has happened over a period of time? Any river, any pond, any lake is an ecosystem, right? These are called as aquatic ecosystems. There are freshwater ecosystems and there are marine ecosystems. Sea and oceans are marine ecosystems. Streams, lakes, rivers are the freshwater ecosystems. Now, if we look at these freshwater ecosystems, अगर हम बच्चों को ले जाएं तो बच्चे देखेंगे कि वहां पे लाइफ है. लाइफ कैसे है? You will see some floating grass-like thing on the surface of water. Then there are plants, bigger plants, water hyacinth, जलकुंभी जिसको बोलते हैं, पिस्टिया, बहुत सारे algae, filamentous algae होते हैं. There are aquatic insects. There are aquatic, nematodes. There are lots of mollusks. शंख जैसे नहीं होते, snails, वो होते हैं water bodies में. शंख जैसे जिनको हम mollusks बोलते हैं, snails. Then there are lots of the worms, annelids also inside the water. So water has various trophic levels. All these ecosystems have various trophic levels. There are plants, algae, which manufacture their own food, autotrophs. Then these aquatic plants, aquatic algae are consumed by aquatic insects. Those aquatic insects are eaten by these tadpoles of the frogs, small fish. Small fish are eaten by the large fish. So there is a food chain. And this, wherever there are various trophic levels and there are interactions between the organisms and their surrounding environment, we call it as an ecosystem. So you have lots of freshwater ecosystems. And we consider river as an ecosystem or a pond as an ecosystem only till then if it has trophic levels intact. अगर trophic levels disturb हो गई, अगर trophic levels नहीं है सारी, अगर एक ही trophic level बहुत ज्यादा quantity में भी है, तो वो ecosystem stable नहीं होता. और अगर धीरे धीरे trophic levels, कुछ एक trophic levels लुप्त हो गई, they are gone, then it becomes a dead system. So gradually what has happened is some of the aquatic ecosystems have become dead, but we are trying to revive, we are trying to restore some of the dead ecosystems using the knowledge of science and technology. We are trying to bring back the ecosystems to their normal levels. We are trying to restore all the trophic levels in the aquatic ecosystems. But majority of the water bodies, natural water bodies, are polluted, and the water which we get in our households comes after treatment. It is treated at various levels and then it goes to a storage area every
state has Jal Nigam, Jal Board, and they have various, treatment systems for the natural water. And then after treating the water using various techniques, using various physical, chemical, biological techniques, the water is purified and sent through the Jal Nigam board, through the these lines which, and we receive that water, right? So water pollution is one area where you can do lots of projects, low cost and scaling up projects with the students. You can tell them to collect water from various sites, find out, observe under microscope and see what organisms are there. So any water which has many organisms can tell us that it has many trophic levels. You can tell them to smell the water. So physical property, odor of the water. You can tell them to compare the turbidity of the water. Turbidity ka matlab hota hai ki when we look at the water, how clear it is. So every student can get water from different sources, and you can put them inside the tubes in the classroom and tell them to compare. जिनमें हमें कुछ नहीं करना, physical, जिनमें कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, ऑर्डर देखें किसमें कैसा स्मेल आ रहा है, फिर उसमें टर्बिडिटी देखें कि कितनी टर्बिडिटी कितनी है, फिर उसका पीएच देखें, ठीक है, फिर उस Solubility. and see solubility, and also compare the water quality on the growth of plants, क्योंकि water अलग quality का होगा. तो maybe take 10 pea plants, and one pea plant को आप ग्रेटर नोएडा के पानी से प्लांट करो, दूसरे को आप गाजियाबाद से, तीसरे को I mean डिफरेंट हाउस होल्ड्स के पानी से देखो, और फिर देखो कि ग्रोथ में कोई चेंज आ रहा है क्या. दिस इज अ वेरी गुड बायोएसे एक्सपेरिमेंट एंड यू कैन मॉनिटर इट. आप बच्चों को बोल सकते हो कि रोज ग्रोथ मेजर करो, प्लांट्स की हाइट मेजर करो, नंबर ऑफ लीव्स मेजर करो, एंड यू कैन से दैट एक्स एरिया का पानी गंदा था क्योंकि इसके लीव्स नहीं बन रहे, या लीव्स में क्लोरोफिल कम है, येलोइंग है, या ड्रूपिंग है. ये सारे एक विजिबल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स हैं, एंड ऑल दीज आर लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट्स, राइट? फाइन. Yes, ma'am. Okay. So I again, want to say that water is a very interesting topic, and we all can do lots of experiments with water. We can use water as a very important material to teach science to the students at primary level. So with these words, I guess it's time, it seems. Can I continue, or yeah? Shall I continue or I should stop? Dr. Kakru? Yes, madam. Yes, ma'am. Shall I continue for 10 more minutes? Or I should stop? Yes, please, ma'am. I just want to continue for 5 more minutes, Yes. and then I'll stop, because I want to conclude. Okay, ma'am. So after discussing that how we can use low cost experiments, I also want to tell you that there is one instrument called Foldscope. Has any one of you heard about Foldscope before? Anyone from the audience? Any teachers out there? No. Okay. In many of the schools, there won't be microscopes, right? बहुत जगहों पे नहीं होंगे माइक्रोस्कोप्स, या बहुत जगहों पे होंगे भी, मगर अगर नहीं है तो एक 400 का एक माइक्रोस्कोप मिलता है. आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा शायद, क्योंकि आपने पहले नहीं सुना. और सिर्फ वो माइक्रोस्कोप मिलता नहीं है, वो माइक्रोस्कोप हम बना भी सकते हैं.
तो एक साइंटिस्ट है मनु, so he was working in US and he prepared one microscope, and that microscope is called as fold scope. So I'm just showing you that fold scope में एक 500 का 400 का इंस्ट्रूमेंट है, तो वो आप ले सकते हो और इस माइक्रोस्कोप के साथ ही आप अपने बच्चों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करा सकते हो. Just have a look at this microscope. I'm sharing with you a video. See, this is a very simple kind of an instrument. ठीक है, इस फोल्ड स्कोप को मतलब ये इसमें एक लेंस है और ऑरिगेमी से बना हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट. इसमें ये एक स्लाइड रखने का एरिया है और 3 पेपर की शीट्स हैं सिर्फ. लेकिन इसमें एक छोटा सा जो काम का चीज है, साइंटिफिकली काम का चीज है, एक लेंस और यहाँ पे एक सर्किट है, a combination of lenses and a source of light. हम माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या करते हैं, we magnify the image. So here they have put the combination of lenses and there is a board here which has some sensors, and at the back when you saw there is a slide रखने का जगह, तो हम उसको इसमें डाल देते हैं and we just observe कि हमें क्या देखना है. So इससे हम माइक्रोस्कोप में वो करते हैं ना adjustments, fine adjustment, coarse or adjustments, these are done simply through origami sheets, right? See, 2 or 3 sheets have been used to prepare a microscope, and these microscopes are available everywhere. The cost is 400 to 500 rupees, and you can buy these for your schools and use these to observe the water samples from various places. So this is a very handy instrument because we are talking about low cost microscopes that can be used. You can even use this low cost microscope with your phone and click the pictures of what you see. So students can appreciate the value of technology. Phone a teacher will always have. So fold scope is 500 rupees, and this can be used as a very handy tool. आपको लीफ मटेरियल भी दिखाना होगा, कभी कुछ भी दिखाना होगा, बट बिकॉज हम वाटर को डिस्कस कर रहे हैं तो वाटर के अंदर आप ऑर्गेनिजम्स दिखा सकते हो बच्चों को कि एल्गी है, क्या इंसेक्ट्स होंगे, कुछ भी होंगे, तो वाटर की मतलब वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स है उनको दिखा सकते हो यूजिंग दिस फोल्ड स्कोप. सो आई होप यू आर एक्साइटेड टू सी दिस इंस्ट्रूमेंट. Yes? Yes, ma'am. Good one. Yes. So I hope many of you will also order this instrument, and it is a discovery of our own young brain. ये हैं, इनका नाम है मनु प्रकाश. So he got lots of accolades for this. ये मैं बस इनका चेहरा दिखाना चाहती हूँ, तो so that you when you tell students that somebody from India has done this work, they will again get attached and hooked to do science because they may not identify with Einstein and Newton, but Manu Prakash is such a easy name, and we identify with such names because we belong to this country. So a young boy, and he
did such an interesting work कि सबके हाथों में माइक्रोस्कोप हो. कितनी बड़ी चीज दी उन्होंने. तो हम बच्चों को इंस्पायर भी कर सकते हैं that tomorrow they can do such things in their own classes. I think I'll stop here. And I will leave you with this thought that you can use this microscope, which is so handy in the classrooms. And I don't want to, be between you and the other activities. Again, I am so sorry that in the morning session, there were some technical glitches, but I hope I made it up in this session. Thank you. If there are any questions, I would love to take. Anybody having any question, so then we close it because already they are tired now till 1 o'clock. Yeah, I know, sir. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम आज का क्लोज करते हैं. We meet tomorrow at 10 o'clock. So, for tomorrow, I would request each one of you at least to plan one activity which you would want to do differently with water with your students. Thank you so much. Thanks, Poonamji. Okay. Thank you, everyone. Thanks for all those who interacted. We should make our sessions more interactive. Then it becomes interesting. Thank you so much. Thank you, Dr. Monica. Thank you, everyone. So we call it a day. You can order Jagriti Sharma ji. You can order on Amazon. It is available on Amazon. Yes, ma'am. It is. Yeah. So for all those who want to buy this microscope and show it to the students to excite them, you can make your classes very interesting if you take this along in your class. Yes, ma'am. Even microorganisms chapter also we can show them some curd or something like that. It can be used for various purposes. अच्छा दिखता है इसमें. It is like a dissecting microscope which costs 2,000 rupees. उसको replace कर दिया है इसने. और बहुत handy है, अपने पर्स में डाल के आप चल सकते हो. Right. ठीक है, thank you. Thank you, everyone. It was a great session, ma'am. Thank you so much. So thank you, everyone. Okay. इम्तियाज बंद कर दो, क्लोज कीजिए. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Kakru. Thanks a lot. Thanks, Imtiaz.